The dignitaries, I request everyone to please rise in their seats and give a big round of applause, my friends. A big round of applause as we are welcoming the former National Vice President of Bharatiya Janata Party, Shri Shyam Jajuji, Member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Jayant Jai Bhaviji, along with the Managing Trustee of MIRES and Executive President of MIRE, Dr. Rahul V. Karadji, Dr. Sanjay Upadhyay, Dr. Parimal Maya Sudhakar, Dr. Abhijit Dhere. Everybody is joining hands for ringing the bell of democracy. My friends, this bell stands as a reminder that in a democracy, every voice matters, every action counts, and leadership finds its true purpose in service of people. A big round of applause as the bell is ringing and resonating. The sound of this bell echoes for the ideals and equality. Thank you very much. I request the dignitaries to kindly light the traditional lamp. The lighting of lamp has since ancient times been a sacred symbol of dispelling the darkness and ignorance and ushering the light of truth, learning and peace. May this flame remind us that education is not merely the pursuit of knowledge, but a journey towards consciousness, a path that leads from self-awareness to nation building and ultimately to world peace. Let's give a big round of applause once again, my friends. A big round of applause, thank you, as the lamp has been lit on this auspicious occasion of commencement ceremony of Masters in Political Leadership and Government, MPG Batch 21. Thank you very much. I request all the dignitaries to kindly accept the chairs. It is my privilege to welcome you all to the commencement ceremony of the Master's Program in Political Leadership and Government, a program that embodies the vision of MIT School of Government, Bharat's pioneering institution dedicated to creating ethical and capable political leaders. Founded under the visionary leadership of Dr. Rahul V. Karad, MIT School of Government was established to professionalize the politics and governance through education that blends knowledge with purpose. The school stands as a bridge between the academia and public life, preparing young minds to engage with democracy through critical thinking, field exposure, and spirit of service. Over the years, my friend, MIT SOG has nurtured hundreds of graduates who now contribute meaningfully to public policy, administration, and political communication. Its unique pedagogy, combining classroom learning with real-world internships and global exposure, reflects our belief that leadership is both an art and a responsibility. As we begin with this new journey with MPG Batch 21, may this program inspire each one of you to lead with wisdom, courage, and integrity. Before we go any further, I would like to request everyone present on the dais, to kindly rise in their seats as we would begin this program with national song Vande Mataram, which would be followed by World Peace Prayer. Vande Mataram, Vande Mataram, Sujalam, Sufalam, Malayaj Sheetalam, Shasya Shamalam Mataram, Vande Mataram. Shubhra-jyosna pulakitayaminim Pulla-kusumita dhrumadala-shobhinim Suhasinim Sumadhura
वरदां मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं. Thank you. I request everyone to please fold their hands, close their eyes, and in the spirit of unity and global harmony, let us join our hearts and voices in the fervent World Peace Prayer. प्रतिपाद्या जय जय स्वसंवेद्या आत्मरूपा देवा तूति गणेषु सकलार्थमति प्रकाशु म्हणे निवृत्तिदासु अवधारी बोधी गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः. पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you. I would now like to request the Associate Dean of External Relations at MIT School of Government, Professor Dr. Parimal Sudhakarji, to kindly propose the welcome address. Thank you, Dr. Gautam. It is my immense pleasure to welcome all our esteemed dignitaries of today's commencement program, as well as students, teachers, and all the members of MIT World Peace University to this 21st commencement program of the School of Government. Today we have three eminent dignitaries with us for this commencement program. And these three dignitaries, they represent three pillars of India's democracy: politics, administration, and judiciary. We have along with us Advocate Jayanta Jaibhave, who is an eminent legal person and a member of Bar Council of Maharashtra and Goa. I welcome you, Jayant sir, to this commencement program, and we are looking forward to your words of wisdom for our students who have taken this unusual path of taking admission for a program which trains them to enter politics. Very soon we will be joined by our another eminent dignitary, Dr. D.P. Agrawal, a former chairperson of Union Public Service Commission, representing bureaucracy administration in our service. Professor Dr. D.P. Agrawal had brought in several reforms in the selection process of UPSC, and after his retirement he is tirelessly working for reforms in our education system. I would like to extend my welcome to Dr. D.P. Agrawal sir as well for this commencement program, who would be joining us very soon. And most importantly, we have along with us today Shri Shyam Jaju, a national leader of Bharatiya Janata Party, a former National Vice President of Bharatiya Janata Party, and someone who has begun his
politics with a passion to change the society, and someone who has started his social activism at the ground level. He has risen from being the district president of Bharatiya Janata Party to someone who has handled BJP's headquarters for many years and ensured synergy amongst the leaders, cadres and voters of BJP. As I said that these three eminent dignitaries, they represent the three pillars of democracy in our country. However, we all know that for selection to judiciary, for selection to bureaucracy, administration, there was always a thorough process that was in existence in our country for many, many decades. However, politics, which is central to democracy, to enter politics, no formal training was required. And it was here that visionary leader Dr. Rahul V. Karad, who envisaged the concept of school of government, that if a formal training is required for an engineer, for a doctor, for a teacher, for a lawyer, for a bureaucrat, then formal training should also be there for politicians, for young minds who want to enter politics and who want to change our country for better by joining the politics. It is with this thought, Dr. Rahul V. Karad sir has started School of Government in the year 2005. This was the most unusual journey for any education institution, to introduce a course to train politicians in their educational institute. However, since last 20 years, time and again, Dr. Rahul Karad sir has shown that this is need of our country. And all the participants who are taking admission year after year in the program of Masters in Political Leadership and Government, they also have reciprocated quite well to the concept of Dr. Rahul V. Karad, that they do not want to enter politics only because of their dynastic background, they do not want to enter politics only because of their passion, but they want to enter politics to change politics and our society by acting professionally in the politics. And it is with this vision, this 2 years course of Masters in Political Leadership and Government has been running quite successfully at the School of Government. In this particular program, the students undergo training wherein they get introduced to local self-government, to the functioning of the assemblies of various states in India, to the functioning of Parliament of India, to the functioning of judiciary, interlinkages between legislature and judiciary, the balance of power between executive, legislature and judiciary, and along with that, the election campaign tactics, all those aspects have been introduced to students, and students get a formal training in all these aspects, wherein they get trained to become a good spokesperson, they get trained to become a good orator, they get introduced to various ideologies that have been working in politics in India and all around the world, so that they can make a confirmed choice which path they want to choose in their political life. With this thought, not only the 2 years program of School of Government has been functioning successfully since last 20 years, but with the initiatives of Dr. Rahul V. Karad, School of Government has introduced several social initiatives like Bharatiya Chhatra Sansad, National Teachers Congress, National Women's Parliament, and most significantly, by bringing together all the MLAs and MLCs in our country, creating a platform like National Legislatures Conference. This is a vision of an educationist wherein students are getting connected to various aspects of society and they are reliving experiences of various sections of our society through rural immersion program, by national immersion program, by international immersion program. And it is a new education model that is being introduced at the MIT World Peace University, and MIT School of Government is at the forefront of this new educational model that Dr. Rahul Karad sir has envisaged and implemented quite successfully. This is the 21st batch of MIT School of Government, and I congratulate all the participants of 21st batch for taking this bold decision to enter politics with a decisive mind,
to choose a path with proper information, knowledge and wisdom. And I wish them all the best, and I am quite confident that like their predecessors, like the alumni of MIT School of Government, all of them also will be very successful in the public life. Today we see that many alumni of MIT School of Government, they have tasted success in social and public life. Some of them are MLAs in the state legislature, some of them are national spokesperson of political parties, some of them are elected representatives at the local body government, and many of them, like Shri Shyam Jaju, they are working for party organizations, for national parties, for regional parties, and are becoming backbone of functioning of those political parties at the national level, state level, and the local level. This is a positive change that School of Government is bringing, and I thank everyone who has joined today in this journey to strengthen the democratic politics of our country. And with these words, I once again welcome all the dignitaries to 21st Commencement program, and I wish all the best to all our students. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. And now, my friends, as per the tradition of our country, Atithi Devo Bhava, I would like to request Dr. Rahul V. Karat, sir, to kindly felicitate and welcome the dignitaries on the dais. First and foremost, I would like to request sir to kindly felicitate and welcome the former National Vice President of Bharatiya Janata Party, Shri Shyam Jaju ji. A big round of applause for Shri Shyam Jaju. Thank you very much, sir, for your kind presence. Next. Next, I would like to request sir to kindly felicitate the member of Bar Council of Maharashtra and Goa, Advocate Jayant Jaybhave ji. A big round of applause, my friends, for Advocate Jayant Jaybhave. Thank you, sir. Thank you very much for your presence. एक सम्मान सर संजय सर My friends, it is indeed our honor and privilege that Sanjay Upad, the former chairman of Union Public Service Commission, Dr. D.P. Agarwal ji, is now here with us. Let's give him a big round of applause, and I request sir to kindly felicitate and welcome him. It is indeed our good fortune that we have the august presence of Dr. D.P. Agarwal ji. What a beautiful gathering on stage, my friends. A personality from law, a personality from administration, and from politics. Everybody is present on stage. Thank you very much. नमस्कार, जय हिंद।
आज का ये दिन केवल एक बैच का शुभारंभ नहीं है, बल्कि एक नए राजनीतिक युग की शुरुआत है। 20 वर्ष पहले जब भारत में राजनीति को केवल सत्ता की सीढ़ी माना जाता था, तब एक दूरदर्शी युवा नेतृत्व डॉक्टर राहुल विश्वनाथ कराड सर ने एक असंभव सा सपना देखा। भारत में भी राजनीति को संस्कार, शिक्षा और मूल्यों के साथ जोड़ा जा सकता है क्या? उन्होंने सोचा कि अगर डॉक्टर, इंजीनियर, आईटी एक्सपर्ट्स बनने से पहले प्रशिक्षण जरूरी है, तो नेता बनने से पहले क्यों नहीं? और इसी सोच ने जन्म दिया MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का। आज उस 20 साल पुराने बीज ने बट वृक्ष का आकार ले लिया है और हमारे सामने ये जो नई पीढ़ी बैठी हुई है, उस सपने को साकार करने वाली सबसे बड़ी प्रतिनिधि पीढ़ी, उनके लिए जोरदार ताली हम सब की तरफ से। आज यहां से निकले अनेक युवा किसी एक विचारधारा के नहीं, किसी एक राजनीतिक विचारधारा के नहीं, बल्कि भारत की विविधता के प्रतिनिधि बनकर देश के कोने कोने में कार्य कर रहे हैं। कोई विधायक, कोई राजनीतिक दल का राष्ट्रीय प्रवक्ता, कोई नीति निर्माता और कई ऐसे भी जिन्होंने केवल इस प्लेटफॉर्म के बल पर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई। हम सब आज गर्व से कह सकते हैं, यह वह मंच है जहां नेतृत्व को दिशा मिलती है, जहां राजनीति को नैतिकता का स्पर्श मिलता है, जहां युवा सपनों को जनसेवा का मार्ग दिखाई देता है। आज जब 21वें बैच का शुभारंभ हो रहा है माननीय अतिथिगणों के माध्यम से, तो यह सिर्फ एक नया सत्र नहीं, बल्कि एक नया संघर्ष और संकल्प है भारत को बदलने का, भारत को एक नई सोच देने का, जिसका सपना डॉक्टर राहुल कराड सर ने 20 साल पहले, समय से पहले सोचा था। तो आइए इस यात्रा को हमने जो देखा है पिछले 20 वर्ष, एक ग्लिम्स के माध्यम से, एक वीडियो फिल्म के माध्यम से उस यात्रा का अनुभव हम करें कि कैसे वो सोच आज एक बट वृक्ष में बदली है। धन्यवाद। जय हिंद। Let us join the politics. The educated people must come in public life. Qualified, competent people must come in public life. अगर आप सफल होना चाहते हैं, कभी भी कुछ बनने का सपना मत देखो, कुछ करने का सपना देखो। Hello, my dear friends. I am MIT School of Government. First of all, I salute the great Indian democracy. I am the first institute in India where the upcoming generations of the country are given training in political leadership. I am extremely proud of the fact that I have been serving the world's largest democracy for the last 20 years. Today, I am glad to have an opportunity to converse with you. My exciting journey of nation building from politics will delight you indeed. You must be curious how I came into being. The torchbearer of transformation in democracy, Rahul Karad has always advocated youth engagement in politics and believed that leadership can be improved if they are groomed and trained well. With this aim, Rahul Karad established me MIT School of Government in Pune in 2005. According to Swami Vivekananda, at first every noble thought is made fun of, then it is opposed, and finally it is accepted. Similarly, Rahul Karad's journey to establish the School of Government has been a challenging one. Initially, when he propelled training of youth in politics, people didn't take it seriously. ऐसे एक छोटी सी जर्नी 2005 में शुरू हुई MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के माध्यम से, जिसके ऊपर लोग हंसे थे। MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट जैसे यहाँ पे पनपा और सभी पॉलिटिकल पार्टियों में पद लेके बहुत अच्छे तरीके से अलग अलग पार्टियों में काम कर रहे हैं और हमारी अपेक्षा है कि एक चारित्र संपन्न और एक अच्छी पीढ़ी हम आने वाले समय में हमारे लोकतंत्र में हम पेनिट्रेट कैसे करें। Amidst the criticism, several prominent people lent their full support to the School of Government.
like former election commissioner T.N. Session. Along with political leadership training, participants are taken for election and national study tours. To refine the political understanding of the youth, every year they get guidance from several stalwarts to understand the nuances of various fields closely. MIT School of Government is not just an institution, but an expression of Rahul Karad's idea for political transformation. The father of the nation, Mahatma Gandhi, used to say, "Be the change you want to see in the world." Through the success of MIT School of Government, Rahul Karad and his team has made these words come true. A big round of applause, my friends, to MIT School of Government and the vision of Dr. Rahul Vishwanath Karad. A big round of applause. Thank you very much, sir, for seeing such a dream. And this year, we are inducting the 21st batch of MPG program. Thank you very much. And now it is important that when a student starts his journey, the feeling that student has is very different. And today we have two such representatives from this MPG batch 21 who would like to express this special feeling on behalf of all the students in the batch. First, I would like to invite on stage Mr. B.S. Prasanna, who comes all the way from Tamil Nadu to participate in MPG batch 21. Please put your hands together and motivate him to address the gathering. Good morning to all respected faculty members, dignitaries, and my dear friends. I am Prasanna from Tamil Nadu, and I am proud to be a part of Masters in Political Leadership and Government MPG Batch 21 here at MIT School of Government, Pune. I was deeply passionate about joining MIT SOG because I have wanted to understand leadership not just as a position, but as a responsibility to learn how good governance can truly bring change in people's life. It's truly an honor to stand here today and share my experience as a part of inspiring journey. It's been just 2 months since I joined, but honestly, these 2 months have felt like a journey of transformation. Coming all the way from Tamil Nadu, I was both excited and little nervous, especially because Hindi is not my strong language. I worried about how I would communicate or connect, but from the very first day, my classmates never made me feel out. They supported me, they guided me, and made me feel at home. What truly makes this course special is that it's not just about theories or classroom lessons, it's about practical learning and ground level experience. Every session, right from field visit and discussion, has opened our eyes to real meaning and leadership and governance. We are not just studying politics, we are learning how to understand people, solve problems, and serve the society. In upcoming days, we will gain even more exposure through real-world experiences like traveling to Bihar during the election periods to witness democracy in action, to participate in National Legislative Conference, NLC, where we'll learn from political leaders, and later during our national study tour, visiting various ministries and even our parliament to understand governance at national level. These opportunities truly make this course one of the kind and prepare us to become future leaders who can make a real impact in this country. In these 2 months, I have grown not only as a student, but also as a very good person. I have learned importance of listening to others, respecting different perspectives, even though we are in different ideas that are at heart of true leadership. I want to take this moment to thank all our mentor and faculty members for their continuous guidance and encouragement. Their insights have made every class thought-provoking and inspiring. Above all, I would like to express my heartfelt gratitude to Shri Rahul V. Karad sir, the visionary founder of MIT School of Government, and this remarkable course, for creating such a unique platform that nurtures young minds
to become ethical and capable leaders of tomorrow. His vision and dedication have truly made a difference in shaping the future of political education in our country. As we continue this journey, I believe we are not just preparing to become political leaders, we are preparing to become responsible citizens and change makers. Thank you. Thank you very much, Mr. Prasanna, and thank you very much for sharing your thoughts with all of us. Now I would like to invite on stage a second participant from MPG batch 21, all the way from Sangli, Maharashtra, Ms. Tanvi Khadilkar. Please put your hands together and welcome her with a round of applause. Good morning, everyone. Respected guests, faculty members, and all the future leaders of School of Government. I am Tanvi Khadilkar from School of Government. Today it's my pleasure that I have got a chance to explore and share my experiences with all of you on this very auspicious day. After completing my bachelor's, I wanted something more than just theories. I was searching for a classroom who can educate me on various subjects like psephology, campaign management, which are not traditionally taught in the colleges. So while searching for it, I came across MIT School of Government. These subjects are actually relevant in the contemporary era, and that's why I wanted to learn them. Also, I was searching for a classroom who will provide me a neutral platform for studying all the ideologies of political parties in India. And that's why I instantly decided to join School of Government. That day and today, it has been 2 months since we are here exploring various ideologies and important aspects of politics. This journey altogether has expanded our scopes and political canvases. May it be our field visits or may it be the classroom debates. It has widened our ability to think rationally, neutrally, and at times sensitively as well. Personally, SOG is providing me more than I expected from this course. Before being a woke politician, it is initially important to critically analyze the policies and decisions made in history as a woke citizen. So School of Government is helping us in that journey. I always wanted to learn things through practical experiences as I learn it better in that way. So I'm grateful that School of Government is giving us that opportunity and scope for implementing our knowledge practically. While looking forward, there are many debates and visits awaiting, which excites me, especially the study tours to Bihar and Delhi, where we can learn and interact with people who are actively indulged in politics and governance of this nation. I would like to thank all our faculty members and non-teaching staff for making us all feel at home and for becoming our friends along with a guide. Also, this journey for me is exciting because of all the fellow students and their cooperation. I would like to thank them all as well. Last but not the least, I would like to thank Rahul Karaj sir. Sir, because of you, this course was given birth. Your desire and constant efforts have made this course very unique in its design. I would like to assure you that on behalf of our batch, that just like your previous batches, this 21st batch will also make you proud in the upcoming future. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you very much, Tanvi. And it is really a good fortune of all these students that on their very first day, the inaugural day, they have such tall personalities present here on stage to guide them all. It is now my honor and privilege as I request the former chairman of Union Public Service Commission, Dr. D.P. Agarwal ji, to kindly address the gathering. Please put your hands together and welcome with a round of applause, Dr. D.P. Agarwal. Good morning, friends. It's a great occasion. I have seen this program to grow from a young days today to the prime youth. This is 20th year of the program. It has an illustrious list of young boys and girls who were educated here to fulfill a dream
which can only emanate from this institute, because both the founder and the successor think very differently, think for the country, and also think how youth should participate in the nation building. So this program, beyond an academic program, has emerged a showpiece in the country where leaders are grown, their dreams are nurtured, and pathways are identified. Nothing can be better than this. Recently, I was in a workshop where there was a question asked, should the future policy making based on the research done in the field? And when I heard both these speakers prior to me, it gives me immense confidence that conducting research at the ground, understanding the data, let this data move into policy frame is a sure recipe of a quality policy which the governments will make. Please continue to do that. I am also aware that over the years, most of you are trained in looking how, as somebody just now used, democracy in action. In India being the largest democratic nation, election is a festival, election एक जुनून है, इलेक्शन एक देश की प्रतिक्रिया है, इसमें युवाओं का सहयोग, कैसे देश को आगे ले जाने की इच्छा, इस सब की एक पिक्चर उभर के आती है। और उसके दौरान आप जब फील्ड में जाते हैं, कैसे डिफरेंट ग्रुप एक तरह से बिहेव करते हैं, कोई और ग्रुप कैसे बिहेव करता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि इन सब में एक ही कॉर्ड है, वो है हाउ टू बिल्ड अ नेशन। आई न्यू फ्रॉम द डे वन that this program is not designed to make you a civil servant, that you will become an IAS. Nobody stops you for that either. I know some of you did get success to become an IAS and IPS, but more than that, it inculcates in you that you would try to lead this nation in the future developmental paradigm. You would be a leader. You would be taking the responsibility of developing policies for the welfare of the nation. In another talk I delivered for Pradhan Mantri Sangralaya 4 years ago, and they asked me what are the challenges for governance. I'll just share 3 points which are important. Fourth, I avoided, and I'll mention that to you. And let me mention that first. People believe, and that's probably Rahulji Karad thought, that we must develop people who are uncorruptible. Those who are educated, they understand that corruption can eat in the roots of everything, and democracy is a part of it. But I always believe the financial corruption is not the critical part of any nation building. What is most critical part of a nation building is the kind of dreams you have for nation. That you always dream to carry the nation forward. You want to do one thing for which you are remembered. In that, when you are in position of power, how to remain equanimous. Most of us tend to swept away by the power when it comes to your hands. But it's more important that each of your decisions taken at that time, when you are the apex of the power, they are not for you, but they are taken with public in mind. Any policy, any decision must inculcate goodness among people. It must inculcate welfare of nation.
it must inculcate, not corrupting the mind, not be too swayed by the kind of storms which keep coming. And therefore another new initiative for which I regard Rahulji greatly, which he is going to launch, is actually launched, is the life transformation exercise, which he is establishing in a place called Dawn, not too far away. Top the leaders are going there. What is the idea? Idea is what he is trying to say through the School of Governance. Idea is that you become a holistic person. You are not swayed easily by one thought today and the other thought tomorrow. You must look at all the possibilities of political framework. You must understand there are different methods of doing various things. And then you choose your own path. And once you have chosen a path, you must move on it. And for that, you must be a person with integrity. You must be a person with passion. You must have a character. And at heart, you must desire to solve the problems whose problems are waiting for too long. We also understand country is moving very fast. We are going to become third largest economy just around the corner. It puts a lot of challenges on us. The old methods of working will change. New paradigm has to emerge. Technology playing a great role. Honorable Prime Minister speaks of Digital India. But then he also puts you a responsibility that when you are assessed, you are not assessed by your question papers, you are not assessed by the examination you do, but you must learn to be assessed what is called 360 degree, where people are able to say that X person coming out of MIT School of Government is the best person suitable to satisfy the needs of the country. I wish the new program very best. My commitment to this program has been for over 15 years. My love to Rahul and my affection to his new thought continues. Whenever you desire that I must be here, I would come. I wish you all very best. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And indeed, I'm sure that all the students, and not just students, but everyone present here today, would be deeply benefited from your words. Thank you very much, sir. My friends, before we embark upon this journey any further, let me set the stage for an extraordinary narrative that unveils the essence of democratic roots. The first National Legislators Conference, Bharat, a historic event that brought together the architects of our legislative framework. This conference, a melting pot of ideas and ideals, stands as a testament to the collective vision that shaped our nation. Of course, the credit goes to the visionary leader and founder of National Legislators Conference platform, Dr. Rahul V. Karad, who has achieved a historic milestone. For the first time in the history of independent Bharat, he successfully orchestrated the gathering of over 2,000 legislators from every corner of the nation. Dr. Karad's pioneering efforts have not only made this momentous assembly possible, but have also paved the way for the meaningful dialogue, collaboration, and shared vision among the legislators from diverse states across our great nation, Bharat. May I take this moment and request my team if they can please show us some of the glimpses of First National Legislators Conference, Bharat. भारतीय संविधान हमारे देश का सर्वोच्च ग्रंथ है जो सरकार को शासन चलाने की शक्ति देता है। हमारा संविधान हर भारतीय की पहचान है जो सभी नागरिकों को समानता की गारंटी देता है।
हर नागरिक को समान अवसर मिले, इसके लिए जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी संवाद बेहद जरूरी है। संवाद से राष्ट्र निर्माण के मूल मंत्र के साथ राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन यानी नेशनल लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस भारत की स्थापना हुई। आजादी के अमृत काल में एनएलसी भारत का जन्म भारतीय लोकतंत्र की एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मुंबई में एनएलसी भारत के प्रथम सम्मेलन का आयोजन 2023 में 15 से 17 जून के बीच हुआ। इस सम्मेलन में अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, लोकसभा विधानसभा के स्पीकर महोदय और एमएलए एमएलसीज ने भाग लिया। पूरे प्लेटफॉर्म से मेरी इच्छा है कि तमिलनाडु का एक कोई एमएलए और महाराष्ट्र का एमएलए, उनकी भी दोस्ती कैसे बन जाए। राजनीति के इस महाकुंभ के दौरान पूरी दुनिया भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े गैर राजनीतिक मंच एनएलसी भारत के गठन की साक्षी बनी। All of us, we are जनप्रतिनिधि, we are public representative, that is important. अमृत काल में ये एक ऐसा आयोजन है जो भारत के लोकतंत्र को और मजबूत करेगा और भारत के लोकतंत्र के मूल्यों को और समृद्ध करेगा। देश के 4,500 विधायक कैसे बने जनता की आवाज, राज्यों के बीच संवाद को कैसे बेहतर बनाया जाए, जनप्रतिनिधियों के बीच आपसी सहयोग कैसे बढ़ाया जाए। दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र भारत के सामने यह कुछ ऐसे सवाल थे जिसका जवाब जन कल्याण के लिए बेहद जरूरी था। आजादी के 75 साल बाद भी राज्यों के बीच आपसी संवाद का ऐसा कोई मंच नहीं था जहां सभी राज्यों के विधायक दलीय राजनीति से ऊपर उठकर सुशासन पर बात कर सके। Thank the young man, Shri Rahul Kada, behind all this. मुंबई में प्रथम राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की कामयाबी इस बात का संकेत है कि आने वाले समय में एनएलसी भारत साझेदारी और संवाद से राष्ट्र निर्माण का एक नया इतिहास लिखेगा। एनएलसी भारत की गौरवशाली शुरुआत के बाद आज हर भारतीय गर्व से कह सकता है कि अगर संविधान भारतीय लोकतंत्र की आत्मा है तो संवाद उसकी धड़कन और एनएलसी भारत उस धड़कन की सबसे बुलंद आवाज है। Let's put our hands together, my friends, and welcome with a big round of applause the Managing Trustee of MITE's Executive President, MIT World Peace University, and the Chief Initiator of MIT School of Government, and the founder of innovative platforms like NLC, BCS, and many more. Please put your hands together and welcome with a big round of applause Dr. Rahul V. Kara. Thank you, Professor Bapat, for those wonderful words for me. You all have seen him many a times. I think your contribution is also in this journey is very, very important. Janani Janmabhumisha Swargadapi Garyasi, on behalf of the bodies of trustees and our revered founder, Dr. Vishwanath Karad sir, our mentor, Shri T.N. Session, the late Shri T.N. Session Sahab, I remember today Dr. Mashelkar, and many other people who guided in this journey. On behalf of all of them, let me welcome the chief guest of today's program, the former Vice President of BJP Party, the National Vice President, Shyam Jaju ji. मैं आपका मन से हृदय से स्वागत करता हूँ यहाँ पे. I want you to put a. I also wish to express my happiness that Professor D.P. Agarwal Sahab in the last minute he could come here. He's always, I don't know how and where you come from, sir. But I think last 10 years now you're supporting this very institution, all the academic initiatives. The former UPSC chairman, he has mentored many IITs in the academic domain. He has wonderfully contributed. And he has, while conceiving this very thought process of MIT World Peace University, Professor Agarwal Sahab has immensely contributed. Thank you, Professor Agarwal, for being here. I want to express my happiness that Advocate Jain Zaibhave Sahab, your contribution again, I must express that the law school, what we have established in the very process of getting approvals from the Bar Council of India. But that is one technical thing, but beyond that, I think is the kind of environment you have created in the BCI member and the senior advocate, and many important cases he has handled in his journey. And recently one very important book
the very 25 important judgments of Supreme Court. It was published by Honorable Chief Justice of India, Gavai Sahab in Delhi. I think soon we will have some photo opportunity here. I want to compliment you, sir, all the way you have come from Nasik. Thank you so much. I want to mention about our chief guest today here, Shyam Jajuji. One important point, I missed it last. In this 21 years of journey, this 21st batch, of course, School of Government student, I see some of the law students and the School of Journalism students intentionally, because as when we talk about the government is about executive, judiciary, media is of course very important, and the legislatures all put together. So I think there is students from all these disciplines, sir, and our leaders here, Professor Agav, Madam Inamdar, all of them, they are mentoring this very mission along with Professor Parimal Maya Sudhakar, who is a very senior writer, thinker, and he is our, the guide in this last now almost 7 years, 8 years, 10 years, 10 years. Thank you, sir. Thank you. You are fantastic. And our program director, who is recently joined here. So thank you, all the members. And today we are going to unveil one very beautiful book written by our Sanjay Upadhyay. You must have seen him many times in this corridor premises, and of course for the particularly School of Government students, many lectures he has conducted so far. For this batch, I don't know how many lectures so far we have conducted, sir. 4 sessions, I think, and we all know his unique style. He contributed various political leaders, including Balasaheb Thackeray and many others, for how the manifesto can be created, how the communication skills and the overall party message can be percolated. So he has a very unique style, but apart from that, he has motivated a number of people of all age groups. And with his rich experience today now, for the first time in the year 2005, when the School of Government was established, my dear friends, he came here for one of the programs, and he said, I'm in love with this very thought. And further, he said that I want to be a part of this very mission, and today he's a part of this mission, advising MIT World Peace University Philosophy and of course the School of Government. So we are curious to see your book today, sir. We will be publishing soon that book on this very auspicious occasion of 21st batch of MIT School of Government inauguration ceremony here. So everyone sitting, and all of you, the future leaders, students in different walks of the life, you are going to go. Of course, the law students, I think Professor Jai Bhaveji's very session will be very important for all of you. The lawmakers and Jai Bhave, sir, what can we say? The law executors, or so I think they are the lawmakers, and the lawyers are the law executors. So I think, and the judiciary. So we all, it is a very beautiful, and from the journalism field also, the 4th pillar of our democracy, we all always say. And great, Shyam Jaju ji, आपका आज का यहाँ पे आना मुझे बड़ी प्रसन्नता देता है कि पिछले 20 साल में उन्होंने जितने भी बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी से जितने भी लोग यहाँ पे आए, तो हमेशा वो पर्दे के पीछे रह के उन्होंने पार्टी की भी उनकी सेवा की है, और हमेशा संगठन में काम किया है। वो कभी भी उनकी ये भावना नहीं थी कि मैं मंत्री बनूं या कुछ और, वो ज़रूर उस तरीके से बन सकते थे, लेकिन मुझे आपकी पार्टी की भी, एक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की, और आपकी मुझे विशेष रूप से, मतलब कांग्रेस पार्टी में भी पुराने समय में ट्रेनिंग का कल्चर हुआ करता था, बट कुछ कारण से अभी वो थोड़ा सा कम दिखता है। लेकिन ये 2 पॉलिटिकल पार्टियों का मैं जब थोड़ा अध्ययन करता हूँ, तो ट्रेनिंग, एजुकेशन, इसको हमेशा इन पार्टियों ने बढ़ावा दिया है। और शायद मुझे प्रसन्नता है, श्याम जाजू जी की स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बाद आपने भी, हमारे स्टूडेंट वहाँ मिस्टर पई, उन्होंने और बाकी सब लोगों ने मिलके वहाँ पे स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के ही बेसिस के ऊपर एक स्कूल वहाँ पे लीडरशिप का भी हुआ है, और भी कुछ जादवपुर यूनिवर्सिटी में, गुजरात में, और भी जगह के ऊपर इस तरीके के स्कूल पिछले 21 साल में। आप सभी स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एक बेंचमार्क के रूप में MIT स्कूल ऑफ गवर्नमेंट का ये जो मॉडल है, जो यहाँ पे बन गया है। और मैं बस आपके सबके सामने इतना ही कहना चाहूँगा कि एक मैनिफेस्टेशन कैसे होता है, और कुछ कल्पनाएं, मुझे तो कुछ आध्यात्मिक अनुभव की तरह लगता है। थोड़ी मेरी तारीफ यहाँ पे हुई, लेकिन मुझे लगता है कई बार व्यक्ति निमित्त मात्र हो जाता है। वी बिकम इंस्ट्रूमेंटल इन द होल एक्सरसाइज, एंड आवर रोल ऑल्सो बिकम इक्वली इम्पॉर्टेंट। मतलब आपको ये भी मैं बताऊँ कि मतलब मैं जब कुछ बाकी लोगों को, जब राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन की बात में श्याम जाजू जी जब एस्टेब्लिश कर रहा था,
तो मुझे नेताओं ने मुझे समझा कि राहुल आप अगर वहां पे, बिकॉज यू आर अ न्यूट्रल पर्सन, यू नीदर कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पर्सन, देन ओनली all the MLAs can come. Of course, Sumitra Taiji, the former Speaker of Lok Sabha, she communicated to all the BJP cadre in the Congress and all other parties. Meera Kumarji communicated to everybody. And of course, the Maharashtra leadership that time, Shri Devendra Fadnavis ji and many other people contributed eventually. But the environment was created. Yes, for the country's solidarity, there is one education group and one individual by the name of Rahul Karad, whom we don't know, but they have started some school last 20 years. We are a little bit aware about it, and political people trusted on us. Imagine that one, and long back I manifested that I will gather some 100, 200 MLAs, and imagine that some 1750 MLAs together, they gathered in city of Mumbai. Unbelievable, and sharing the best practices of different states. The Kerala may be having Congress government or Maharashtra has a BJP, but मुझे लगता है कि सरकार एस्टैब्लिश होने के बाद नीतियों का एक दूसरे के साथ आदान प्रदान होना जरूरी है। फिर से नए सिरे से पायलट प्रोजेक्ट वहां पे जो बन गया है, उसका पूरा हम पॉलिटिकल पार्टियों में भी जो ईगो है श्याम जाजू जी कि उस पार्टी ने कुछ योजना वहां पे, तो हम उसका पूरा नामकरण बदल देंगे और भी कुछ चीजें करेंगे, और कई बार ऐसा भी होता है कि उसकी नजरअंदाज भी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, इस फोरम के माध्यम से मुझे प्रसन्नता हुई कि करीबन 150 एमएलएज में, कि एक बीजेपी के एमएलए, एक कांग्रेस के एमएलए, ऐसे उनमें हमने एमओयू बनाया है। श्याम जाजू जी, आपको पता होना जरूरी है ये, उस रिपोर्ट में पूरा एमओयू, क्यों कि हम अपने अपने तरीके से अपने आइडियोलॉजी के अनुसार अपनी जो एक विरोध की जो भूमिका जो लोकतंत्र में है वो तो जरूरी है, लेकिन आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर अच्छा काम कुछ आपने किया है तो हम सीखना चाहते हैं, इस कॉन्स्टिट्यूंसी का काम हम सीखना चाहते हैं। तो ये जो उदारता है ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। और पॉलिटिकल कल्चर की मैं बात यहाँ पे हमेशा पहले भी बोला हूँ कि हमें अच्छा आइडियल पॉलिटिकल कल्चर देश में बनाने की ज़रूरत है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहूँगा कि अभी 150 एमएलए लगभग अमेरिका 20 पॉलिटिकल पार्टियों के, बीजेपी के 30-40, कांग्रेस के 30-40 और भी रीजनल पार्टियों के सभी लीडर्स को हम लेके बॉस्टन गए थे। मुझे नहीं पता था कि अमेरिका में ऐसी कुछ बॉडी है, लेकिन NCSL नाम की वहाँ पे एक बॉडी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। मैं समझता हूँ प्रोफेसर राघव मैडम इनामदार, दैट लॉ के भी बच्चे और भी स्कूल ऑफ गवर्नमेंट के बच्चे जो इसमें अगला एडिशन शिकागो में होने जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स को आने वाले समय में शिकागो में वहाँ पे करीबन 3500 लॉ मेकर्स, इवन जर्नलिज्म के भी बच्चे, जो आपको वहाँ पे आने की अगर इच्छा है, बिकॉज इतना बड़ा एक्सपोजर, मतलब 100 पैरेलल सेशंस। श्याम जाजू जी, मैं बिलीव नहीं, मतलब हम पहले एडिशन में हमने 50 पैरेलल सेशन किए, वो भी एक विलक्षण था, किसी यूनाइटेड नेशंस की या किसी भी कॉन्फ्रेंस हो उससे भी बेहतर वो वहाँ पे प्रदर्शन हमने किया। लेकिन इतने डिटेल जो अमेरिकन डेमोक्रेसी के साथ ही हमारी चाइना के साथ तो कंपैरिजन हो नहीं सकती डीपी अग्रवाल सर, तो उस भूमिका से मैं जब अमेरिका की तरफ देखता हूँ तो शायद हम उसी फेज में, अभी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज देश में बन रहे हैं और भी रोड रास्ते बन रहे, तो शायद 40 साल पहले जो अमेरिका में जो रोड रास्ते और जो लैंड ग्रांट स्कीम के माध्यम से 50-70 साल पहले भी कुछ डेवलपमेंट वहाँ पे हुई, और इंस्टीट्यूशंस और जो कारखानदारी तक की डेवलपमेंट, बाकी डेवलपमेंट, तो शायद कुछ एरियाज में हम उसी तरीके से, उसी फेज से हम गुजर रहे जाए भावेश जी। तो उस तरीके से मैं उस देश की तरफ देखता हूँ, और इतना कुछ लर्निंग रहा। अभी 150 एमएलए जब लेंगे तो वहाँ के 3000 एमएलए लगभग वहाँ के, जिनको स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स एंड स्टेट सीनेटर्स बोलते हैं, और हमने एक बुकलेट भी बनाया था कि कंपैरिजन बिटवीन दिस टू डेमोक्रेसीज, वो भी हमने हमारे सभी एमएलएस को दिया था पढ़ने के लिए। तो बहुत उत्साह से हमारे सभी भारत के सभी पार्टियों के एमएलएज ने वहाँ पे भाग दिया, भागीदारी दी, उसका एक बहुत अच्छा रिपोर्ट भी बना है। लेकिन कहने की बात है कि जो अग्रवाल सर ने बोला कि करप्शन ये कोई महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं है, मतलब इन द सेंस, बट उन्होंने जो बात बोली उसको समझने की कोशिश करी। हमारे इट इज़ अबाउट द माइंडसेट, इस देश का पॉलिटिकल कल्चर कि खाली जीत के आने के लिए कास्ट हमें चाहिए, हर एक को हमें लगता है हम कि भाई मैं, मेरे जाति के वोट मुझे मिले तभी मैं पावर में आऊँगा। ये पूरा गणित जो है सिंपल है, इसके ऊपर सोल्यूशन क्या है? आई वॉन्ट ऑल द स्टूडेंट्स to think over it, you know. अभी तन्वी आपने भी और प्रसन्ना, both of you have spoken in Tamil Nadu, very wonderful example of Tamil Nadu, the श्याम जाजू जी, इसके ऊपर आप ये प्लेटफॉर्म भले ही छोटा दिख रहा है, small number, but it is very very powerful.
the students in the different places they have gone, and academically it has communicated so many ripples across the nation. The training की बात देश में बढ़ाने के लिए इस संस्था का जो एक भूमिका रहा है, हम कोई क्रेडिट या मैं कोई राहुल कराड़ तो एक छोटी सी व्यक्ति बन के रह जाता हूँ मैं उसमें, इंस्टीट्यूशन हम तो 10, 20, 50 साल बाद कोई ये चलेगा आगे ये तो, लेकिन यू नीड्स समबडी देयर एज जो मेरी न्यूट्रल भूमिका एमएलएज को भी इकट्ठा करने में रही या एज ए व्यक्ति के रूप में जो सभी लोगों ने बोला ना आप वहाँ पे है तो न कोई अगर बीजेपी कांग्रेस या सरकार का ये प्लेटफॉर्म है तो हम इसमें आने के लिए हमारी अनुमति नहीं है, इसमें हम नहीं, ऐसे पॉलिटिकल पार्टियों के लोगों ने मुझे बोल के दिखाया, मतलब आई एम नॉट बिलोंग टू एनी पार्टी। तो मैं कहने की बात ये कह रहा था कि खाली विनिंग द इलेक्शन, ऑल द लॉ स्टूडेंट, जर्नलिज्म स्टूडेंट, यू हैव टू लिसन टू दिस केयरफुली कि विनिंग द इलेक्शन कांट बी जस्ट, एंड फॉर विनिंग द इलेक्शन व्हाट फर्दर मेजॉरिटी ऑफ आवर लीडरशिप they all the time they are in that very journey and the process of कि how do I win the election जय भावे जी, बस विन करने के लिए फिर ये न कि न प्रकार है ना मुझे जात चाहिए, मुझे बाकी चीज़ें, तो उससे जातिवाद भी बढ़ रहा है देश में। तो मुझे कुछ सिंपल चीज़ें मुझे दिखती है कि हम छोटे छोटे सॉल्यूशंस, इसके ऊपर सॉल्यूशन क्या है? रिजर्वेशन की बात, महाराष्ट्र में इतनी जात की बात कभी भी नहीं हुई थी जो पहली बार इतने सालों में हुई है। मैं 40-50 साल पहले भी मैंने पुराने बुजुर्ग हमारे फाउंडर साहब से भी बात कर रहा था, वो बोले राहुल 30-40 साल पहले हम इतना नहीं, मतलब चैलेंजेस उस वक्त के अलग थे, बट अभी जो घृणा हमारे सबके मन में जाति का जो, तो यू एज ए यंग जनरेशन नीड टू थिंक ऑन दीज लाइन्स कि कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन, ऑल दिस, एंड 100% देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, वेरी सिंपल सॉल्यूशंस। मुझे नहीं पता कि पॉलिटिकल पार्टियों के कंसेंसस, पॉलिटिकल कितने अध्यक्ष होंगे पूरे देश के प्रमुख, तो उनमें ये कंसेंसस होना एक नेशनल मैंडेट की तरह कि भाई ये हमारा कॉमन एक मेमोरेंडम है और हम इसको रिजॉल्व करते हैं। मैं तमिलनाडु का उदाहरण यहाँ पे देना चाहूँगा कि पेरियार साहब ने, यू रिमेंबर इन तमिलनाडु नोबडी पुट्स अ सरनेम, you know, you don't have a surname. How many people are aware in Tamil Nadu the decision was taken by the Periyar ji at that time that there is no surname. Here, if I say Mr. Agarwal or Shyam Jaju ji, I can go till the Gotra. You get me? Simple, smallest of the small things. Can't we adopt something what Tamil Nadu has done some 40-50 years back? Prasanna, this is a question for you and each one of you to think about it. हमें सबको अभी तो ऐसा सिचुएशन माहौल बन गया कि द स्पिरिचुअल लीडर्स श्याम जाजू जी पुटिंग देयर सरनेम सो बिग आगे पीछे एंड एग्जैक्टली दोज पॉलिटिकल पार्टी एमएलएज और लीडरशिप और हुएवर अदर पीपल दे सी दैट कि मेरे जाति का जो कोई स्पिरिचुअल गुरु है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, इफ ही कम्स एंड ही डू प्रचार, इट हेल्प्स मी. आई डोंट नो, इज इट अ स्पिरिचुअलिटी, इज इट अध्यात्म? I do not understand, and we are loudly wanting to, मतलब what Sant Tukaram Maharaj, Sant Jnaneshwara said कि जाति कुळ माझे गेले हरपून. We have forgotten all these boundaries, and there is a very some 4,000 years back when there was some purpose that time, segmentation in our philosophy, our ethos, but we have corrupted this very caste system of our country. Maybe once upon a time it must be the greatest strength. I do not want to get into that very deep subject. बट आप सब लोगों को, हमें संजय उपाध्याय जी, हमें विचार करने की ज़रूरत है. ऐसे मेरे सामने ऐसे 10 सॉल्यूशन है मेरे दिमाग में. मैं कंपैरेटिवली छोटी व्यक्ति हूँ, लेकिन मैं छोटा भी नहीं मानता. शिक्षण संस्था इतनी बड़ी, आप सब लोग मेरे साथ है, हमारी संस्था की भी शक्ति 26,000 यहाँ पे इसी कैंपस में और पूरे मिला के 1 लाख बच्चे पढ़ते हैं. ये कोई छोटी संस्था नहीं है. बट मैं उस तरीके से, मैं हम्बली में ये बात, आई एम जस्ट ट्राइंग टू पुट इट दैट यू पीपल हैव टू बी द really thinkers on every area. What solution can be communicated and further we can, so ये एक पायलट तमिलनाडु में हो चुका है. TN Session, any surname. N Gopalaswamy, where is the surname? Mr. Karunanidhi, where is the surname? Mr. Stalin, where is the surname? There is no surname. My friend Mr. Karthik, well, sir, we don't put surname here. हमारे यहाँ पे तो मतलब कोई वड़ा पाव का ये भी है तो हमें वो ये भी दिखाना है कि जोशी वड़े वाले, आप समझ गए क्या? तो हमें ये इन सब चीज़ों में कि नहीं, मतलब क्रेडिबिलिटी आता है कि लोगों को लगता है कि भाई ये जाति से कोई ये चल रहा है, कोई अग्रवाल जी का कोई स्वीट मार्ट है तो ये अच्छा ही होगा. तो हमारी साइकोलॉजी भी सबकी जो है ना, ये फ्रेम, मेंटल फ्रेम बदलने की, मैं बहुत मूलभूत बात बोल रहा हूँ. ये सबको अच्छी नहीं लगती बातें. स्टूडेंट्स, ट्रस्ट मी, everybody will not like this concept, but I am very confident
10, 20, 30, 40 years down the line, there will be some effect of all this, what we have initiated just now, and we have to openly discuss. मुझे इवन ये जाति जाति के भी ग्रुप्स और उसके ऊपर का विशेषण देख के उस तरीके से जो संगठनात्मक भी जो काम होता है, मुझे उससे भी मुझे कंसर्न है कि वेयर आर वी गोइंग. सो हमें ये सब ब्रेक करना है. तो ये डिसरप्शन, यू गाइज नीड टू थिंक, ऑल ऑफ यू नीड टू थिंक कि हाउ एंड व्हाट वे वी कैन डिसरप्ट द सिस्टम विच इज गोइंग फ्रॉम एजेस. एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव मुझे खुशी है कि अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है. मैं बहुत इमोशनल हो जाता हूँ इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर. जय भाई जी, मुझे सिंपल सॉल्यूशन दिखते हैं कि राजनीति में भी ऐसी कुछ कल्पना मैंने उस दिन मेरे इंडक्शन प्रोग्राम के भाषण में आपके सामने बोली थी कि पॉलिटिकल पार्टियों ने अपने हिस्टोरिक जो महापुरुष है उनको भी हमने बांट दिया है पूरी तरीके से. मैं परसों अखिलेश यादव जी के साथ जूम कॉल से मीटिंग कर रहा था, तो पीछे कुछ सैफरन स्वामी विवेकानंद जी के इनके, तो मेरे लोग भागते कि सर वो पीछे के फोटो आप, मतलब पीछे के फोटो निकाल दूं मैं. तो हम कहाँ जा रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे एडवाइजर्स मुझे इस तरीके से. मिस्टर उपाध्याय, जस्ट थिंक ओवर इट, यू नो. वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड कि सावरकर बीजेपी को दे दिए, इनको सैफरन दे दिया, अब बीजेपी को. सैफरन इज नॉट ए बीजेपी कलर, इट इज आवर सनातन. आई सी दैट इंडिया का, भारत का एक अपना कल्चर है, अपनी संस्कृति है उसका वो. बट लेट अस नॉट इवन अलाउ पॉलिटिकल पार्टीज टू यूज आवर हीरोज. How do we really work on that? You all have to think, all our greatest heroes of the country, the saints and the sages and the freedom fighters, we all have distributed in the different political parties. Please do think over it. You know, talk about development agenda, but don't use their photos. And win the election. You let us not make the politics with the heroes, Chhatrapati Shivaji Maharaj or whoever those Maharana Pratap or the greatest people of the country. ऐसे simple solutions मुझे दिखते हैं. You know, इतने सारे problems, because हमारा perception बन जाता है कि yes, I am a scheduled caste person, I am a backward, I am a forward, I put Baba Sahib photo and try to appeal the people. Put the development agenda in front of you. So I think so much, Parimal ji, you have spoken, everybody, the films is shown. So the very objective, all the law student, economics and public administration students are also there, journalism student, and of course the School of Government. Each one of you need to think. This is the 21st with lot of commitment and passion. This idea, the newspaper I saw, some of those young leaders, and it came in my mind and I became instrumental, and that manifestation, people were discouraging me कि ये क्यों कर रहे हैं, इसमें क्या आगे होगा, ये राहुल ये छोड़ो, ये ऐसे कुछ राजनेता थोड़ी बनते हैं. बट हमारे कितने सारे एमएलएज भारतीय छात्र संसद से, मिडसॉक से 7-8 एमएलए, जिला परिषद के मेंबर्स. सो इट इज नो मोर यूटोपियन थॉट. और सभी विधानसभाओं में अभी एकेडमिक पार्टनरशिप करके हम अगले 5 साल में, जय भावी जी, हमारी एम्बिशन है कि एवरी विधानसभा विल हैव वन स्कूल ऑफ गवर्नमेंट वेयर वी विल बी द नॉलेज पार्टनर, एकेडमिक पार्टनर फॉर देम. 6 विधानसभाओं के साथ अपने MOU भी बन चुके हैं. लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर की कल्पना भी अभी यहाँ पे अग्रवाल सर ने बोली है. ब्यूटीफुल सेंटर फॉर ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स. ऑल द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गो देयर. द टीम बिल्डिंग, लीडरशिप, agriculture and nature, spirituality and peace. Through the experiential learning, we are going to teach for your completeness, and we are going to teach you minimalism also. आगे जाने के लिए थोड़ा पीछे आओ. The minimalism. We did little survey. 50% students are taking. How many of you take your mobile in bathroom, sandas, में morning में? It is not good. You know, the young people. So we have put simple, traditional our bathrooms there. We are going to take the mobiles from the students. So this MIT World Peace University, our revered founder today, he is not here because of little, his weakness, but his health is perfect. But the purpose is what the very Vivekananda's one thread, the unification of science and spirituality he carried in his lifetime. And so many manifestations. He was a petitioner for the Ayodhya that Ram Mandir की जगह राम मंदिर भी होना है 60 एकड़ में, और एक 50 एकड़ में से 10 एकड़ जमीन हम बाकी भी धर्मों को दे सकते हैं क्या. उसका ये सिंबल है. श्याम जाजू जी, आप बीजेपी से है, तो मतलब ये स्पिरिट हमेशा कि भाई प्रभु रामचंद्र इज अ सिंबल ऑफ इंक्लूसिविटी. सो दैट वाज अ मैसेज. So this institution is not for the fashion. MIT World Peace University and the School of Government, all these ideas. So our commitment, our honesty in this very field, what we have been trying to propagate, it has given the results through all the students. Over 100,000 students are alumni working across the country under this AJS and group. And School of Government in the political domain, the democracy, every government
there is so much of respect and, you know, the message that yes, some such experiments what here, Indian Students' Parliament, the National Women's Parliament, can we replicate in other states and many places this youth parliament now. Government of India also, युवा मंत्रालय को भी हमारी चर्चा हुई सर, प्रधानमंत्री जी भी उसमें आए थे, विज्ञान भवन में 4 साल पहले नेशनल यूथ पार्लियामेंट वहाँ पे हुआ, हमारा छोटा सा रोल रहा उसमें, बट मैं कहने की बात है कि ये सब पूरे भारत में यूथ पार्लियामेंट की कल्पना कि भाई पढ़े लिखे लोग राजनीति में आने चाहिए, अच्छे लोगों ने राजनीति में आना चाहिए, सभी राजनेता चोर है, पॉलिटिकल पार्टियाँ भ्रष्ट है, ये मानना गलत है। अच्छे लोगों ने राजनीति की तरफ, क्वालिफाइड लोगों ने, हमने गुन्स एंड बैड पीपल उनके हाथ में ये देश नहीं सौंपना है, हमें राजनीति में आना है। हमें दूर से नहीं देख सकते कि यू नो NGOs cannot run alone the political party. NGOs are important, but we want most qualified, competent people get into the government system and decorate those positions. So मैं फिर से एक बार प्रोफेसर उपाध्याय मैं आपका स्वागत अभिनंदन. You took an effort, your inspiration, what you long back, I think it has culminated somewhere. I think your bandwidth was utilized for various other issues, but I feel Professor Parimal ji making a use of sir here will be very, very appropriate. And once again, श्याम जाजू साहब, आपका आज समय निकाल के आप आए हैं 20 साल की जर्नी में. आप पर्दे के पीछे से, हम बस यहाँ पूरी सिस्टम श्याम जाजू जी, वहाँ पे कौन आए, महाजन जी आए, जितने भी नेता यहाँ पे आए बीजेपी से, तो वो पर्दे के पीछे से बीजेपी का हेडक्वार्टर में जो प्रमुख 4-5 लोग वहाँ पे थे, 15-20 साल वहाँ पे उनकी सेवा रही, तो वहाँ पे उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया संगठन में. और मैं आपका मन से, हृदय से आपको भी शुभकामनाएं देता हूं कि आपके हाथ से और भी बड़ा काम हो और इस एकेडमिक विषय में आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप रुचि ले. जावेद भाई जी, आपका भी मैं मन से स्वागत अभिनंदन करता हूं कि फर्स्ट टाइम यू आर कमिंग फॉर द फॉर्मल प्रोग्राम हियर. थैंक यू ऑल द रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड एवरीबॉडी. थैंक यू. Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. And indeed, all the aspects that you covered in your speech would make all of us introspect. Excuse me. My friends, it is important that in life of a student that he listens to the views and thoughts of tall personalities who are present here today on stage. But at the same time, it is important that students have I would say, an important literature to fall back on. Books play an extremely important role in every student's life. And today, we are fortunate that we have on stage motivational speaker and orator and the founder of Mana Karare Prasanna, Dr. Sanjay Upadhyay ji, who has written an important book which is going to be a part of your curriculum. The book is We Make Common Man a Leader. Empowering Youth, Nurturing Leaders. A book that is divided, I would say articulated in 10 different modules, starting right from foundation of inner leadership, self-awareness, personal mastery, communication for impact, and so much more. I would like to take this moment and request all the dignitaries on the dais to kindly unveil this book in this important occasion. And what a good fortune that we have the author of the book present on dais. A big round of applause once again, my friends, as we unveil We Make Common Man a Leader. Thank you very much. And I now request the author of the book, Dr. Sanjay Upadhyay ji, to kindly address the gathering. आदरणीय मंच और मित्रों, 2009 साल में मैं यहाँ लेक्चर देने आया था एंडोमेंट लेक्चर सीरीज़ में, और विषय था व्यक्ति शांति से विश्व शांति. और मैंने कहा था कि व्यक्ति शांति और विश्व शांति के बीच में राजा रहता है.
जो महाभारत में युधिष्ठिर ने सवाल किया भीष्म से कि सबसे सुप्रीम कौन है, लॉ सुप्रीम है, फिलॉसफी सुप्रीम है, किंग सुप्रीम है या टाइम सुप्रीम है, समय। तो भीष्म जी ने जो जवाब दिया है वो है कालो वा कारणम राज्ञो वा राजा कालस्य कारणम इति ते संशयम भूता राजा कालस्य कारणम। सो राजा किसी भी काल का कारण रहता है। ये भाषण में बोला मैं और राहुल जी उस कार्यक्रम में उपस्थित थे। तो जैसे ही व्याख्यान हुआ मेरा, मुझे पता चला कि स्कूल ऑफ गवर्नमेंट नाम का एक बहुत बढ़िया उपक्रम यहाँ पे चल रहा है एंड आई फॉल इन लव विद द प्रोसेस बिकॉज बहुत सारे पॉलिटिकल मंच पे मैं गया हूँ। बचपन में आरएसएस में जाता था तो जनसंघ है, बीजेपी है, फिर बाद में शिवसेना में गया, मेंबर नहीं बना लेकिन उनके साथ दोस्ती रही। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो पहला लेटर जो पब्लिश हुआ था कि क्यों ये डिसीजन लिया गया है सोनिया जी के खिलाफ, तो वो ड्राफ्टिंग मैंने किया था राष्ट्रवादी कांग्रेस का। ऐसे बहुत सारे समय तक बीइंग अ पब्लिक स्पीकर इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में जाने के बाद पहली बार जो मन में मेरे थोड़ी उमंग थी कि भारतीय राजनीति में क्या लैकुना है, तो वो है जो भारतीय पूरी संस्कृति जिस अध्यात्म पे बेस है, दैट स्पिरिचुअलिटी इज मिसिंग फ्रॉम द पॉलिटिक्स। स्पिरिचुअलिटी में सैक्रिफाइस रहता है, ईगो का सैक्रिफाइस स्पिरिचुअलिटी में रहता है। और वो राहुल जी के बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये एक ऐसा स्कूल यहाँ बना है जहाँ पे आने वाले 10-25 सालों में भारत को जो राजकारण करने वाले चाहिए उनको यहाँ तैयार किया जाएगा, नर्चर किया जाएगा। तो तब से मैं इस एसओजी से जुड़ा हूँ यहाँ पे और 16 साल हुए इस चीज़ को। आस्ते 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 ये 16 साल का जो चिंतन है मेरा, वो पूरा चिंतन इस किताब में मैंने लिखा। और वो भी राहुल जी ने ये कल्पना दी। कई बार हम मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बात करते हैं, तब मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ऐसे लगता है, मुझे ऐसे लगता है। तो फिर राहुल जी ने कहा इसका सिलेबस तैयार करो जो लीडरशिप के बारे में बात करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडर बनाना है, हमें लीडर बनाना है, सिर्फ लीडर बनाना है और कुछ नहीं। बाद में मैं नेता बन जाऊंगा बीजेपी का, नेता बन जाऊंगा कांग्रेस का, नेता बन जाऊंगा समाजवादी का, लेकिन ये समाजवादी, कांग्रेस, बीजेपी, ये सब लेबल्स है, वो एसओजी से बाहर जाने के बाद लगने चाहिए। तब तक मैं जो लीडर हूँ, वो लीडर सब में इतना सारा ज्ञान भरा हुआ है, वो स्टूडेंट्स को मिलना चाहिए। सो प्री कंसीव्ड नोशन या प्री जुडिशियल नोशन में बच्चों को तैयार नहीं करना है। तो ये ध्यान में रखते हुए मैं चिंतन करता रहा। हर बार जब भी मौका मिला लेक्चर देने का, स्टूडेंट्स से यही कहता रहता हूँ कि उससे एक फ़ायदा होता है कि मनुष्य अच्छा बनता है। अगर आप मनुष्य करके अच्छे नहीं हो तो आप लीडर भी अच्छे नहीं हो। आप मनुष्य अच्छे हो तो ही आप अच्छे इंजीनियर हो, नहीं तो इंजीनियर बहुत बढ़िया और घर में जाने के बाद पति अच्छा नहीं है तो फ़ायदा नहीं है। ज़िंदगी में पूरा मनुष्य अच्छा बनना चाहिए और फिर वो अपने डोमेन्स में काम करेगा। मैं पॉलिटिकल डोमेन में हूँ, सोशल डोमेन में हूँ, तो ये सब मेरे दिमाग में चलता रहता है। तो वही सारा चिंतन लेके ये 10 मॉड्यूल्स मैंने तैयार किए हैं जो मैं खुद पढ़ाऊँगा इस 21वीं नई बैच को। और ख्याल यही है, जैसे परिमल सर ने कहा कि प्रोफेशनल शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है। प्रोफेशनल शब्द का भगवद गीता में जो शब्द है उसे व्यवसायात्मिका कहा है। व्यवसाय मीन्स नॉट बिजनेस, बिजनेस एंड प्रोफेशन में फ़र्क है। तो दृढ़ निश्चय से किया हुआ जो काम है, दैट इज कॉल्ड व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परत चेतसाम। कृष्ण कहता है अर्जुन से कि भोग और ऐश्वर्य में रममाण हो गया तो वो नेता नहीं बन सकता, लेकिन व्यवसायात्मिका बुद्धि से काम होना चाहिए। तो वो उसके लिए हमें लीडर्स को कुछ ट्रेनिंग की आवश्यकता है। आज तक भारत के पूरे जर्नी में हमने देखा है कि 1947 टू AK-47 ये जो जर्नी है उसमें व्हाट वी आर लैकिंग इज वी लैकिंग दैट स्पिरिचुअल कैनवास। सो आपका मटेरियल सक्सेस एज अ लीडर ऑन द बैकग्राउंड ऑफ स्पिरिचुअल कैनवास, तभी बात बनेगी। नहीं तो ये जो कल्पना की है NLC के बारे में राहुल सर ने, वो प्रत्यक्ष में नहीं आ सकती। वो इसलिए आनी चाहिए कि तमिलनाडु के टोटली डिफरेंट इज़म का नेता महाराष्ट्र के टोटली अलग इज़म के नेता के साथ में आइडियाज़ एक्सचेंज करता है। इसके लिए बड़ा दिल चाहिए। वो उदार चरिताणाम तो वसुधैव कुटुंबकम, दैट इज़ द थॉट वॉज, महोपनिषद में है।
तो ये भी गलत कहना है कि वो संस्कृत में है इसलिए वो हिंदुइज्म है। संस्कृत में ज्ञान है, संस्कृत इज द नेम ऑफ लैंग्वेज। तो हमें ज्ञान लेना है, वेदर इट इज़ इन तमिल, वेदर इट इज़ इन तेलुगु, वेदर इट इज़ इन संस्कृत, दैट डजंट मैटर। हमें ज्ञान लेके मनुष्य को तैयार करना है। दैट इज़ व्हाट द ट्रांसफॉर्मेशन, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर तैयार करा है। एसओजी इज़ अ नेशंस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर। पूरे देश का लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने का सेंटर यहाँ पे तैयार किया है। आर्य चाणक्य ने वही कहा है, अगर राष्ट्र का विकास होना है तो अब वो काम शिक्षकों का है, और वो शिक्षक यहाँ पे बैठे हैं जो, इसलिए मैं राहुल सर की तरफ वो चाणक्य का सेंटेंस जो लिखा हुआ है कौटिल्य अर्थशास्त्र में, उसके बारे में सोचता हूँ। वही हमारे संस्कृति में भी है। सांदीपनि ऋषि ने कृष्ण को तैयार किया, मतलब स्टूडेंट को तैयार किया। विश्वामित्र ने श्री राम जी को तैयार किया, स्टूडेंट को ही तैयार किया। आर्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को तैयार किया, स्टूडेंट को ही तैयार किया कि राष्ट्र के विकास के लिए, उद्धार के लिए। बस वही मकसद रहा ये किताब लिखने का, और इनका इंस्पिरेशन था राहुल सर का। मैं आप सभी के सामने बड़े अंतःकरणपूर्वक मन से मैं राहुल जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने वो, अगर वो नहीं कहते कि किताब लिखो, शायद वो नहीं होता था। इट्स अ मैटर ऑफ इग्निशन, एक चाबी लगती है वैसे वो उन्होंने मुझे कहा, और आज ये किताब का यहाँ पे प्रकाशन भी हुआ है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राहुल सर का। और आज के जो मेहमान हैं उनका यहाँ का उपस्थित रहना मेरे लिए और उत्साहवर्धक है। और मेरा सपना यह है, लास्ट पॉइंट, जैसे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई ऐसा है, तो अगले आने वाले 5 साल में, 10 साल में एसओजी दिल्ली, एसओजी चेन्नई, एसओजी कलकत्ता, एसओजी बेंगलुरु, एसओजी मुंबई, इस तरह का शाखा तैयार होके पॉलिटिकल पार्टीज़ को एसओजी कहने के बाद, जैसे कॉरपोरेट्स को आईआईटी कहने के बाद ऐसे लगता है, वैसे पूरे पॉलिटिकल पार्टीज़ को हिंदुस्तान के एसओजी कहने के बाद मन में आदर और डर दोनों पैदा होना चाहिए। थैंक यू सो मच। Thank you, sir. Thank you very much for giving us deep insights into the book that you have recently published. And I'm sure that the dream that you have seen, that in time to come, that every major city will have its own school of government, I'm sure indeed this dream would come true soon. Thank you very much once again, Dr. Sanjay Upadhyay ji, for being part of this function today. My friends, it's now time that I'm going to invite the special guest of honor, Advocate Jayant Jaibhavi ji, to kindly address the gathering. But before I do that, sir, please give me a minute more. Before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a small film made on life and work of Advocate Jayant Jaibhavi ji. That justice is not just an ideal promise, it's a commitment that Advocate Jayant Jaibhavi has upheld with unwavering dedication for over the years. He is a member of the Bar Council of Maharashtra and Goa. He is a revered name in the legal fraternity. Advocate Jaibhavi is known for his expertise in civil law and criminal defense. Jaibhavi believes law is not just a profession, it's a tool for empowerment. Every case he selects is a step towards fairness and justice. With a reputation for thorough knowledge, expertise, and service-oriented approach, Advocate Jaibhavi has represented numerous clients, earning their trust and the respect of the legal community. His thought process that every voice deserves to be heard has led him towards protecting rights, resolving disputes, and standing up for justice. Advocate Jayant Jaibhavi is an inspiration of justice with dedication and law with integrity. Today, we warmly welcome Advocate Shri Jayant Jaibhavi to the MIT School of Government's 21st commencement ceremony. And my friends, this, I would say, function is really proving to be a treat for all the students present here today, because the person I'm going to invite next to address the gathering, Advocate Jayant Jaibhavi ji, has also come here with a beautiful treat of book for all the students present here. And the book is Life and Law, Judgments That Influence the Life of Common Man. This book has curated 25 cases which have in detail the background, arguments from both the sides, outcomes, court's reasoning, practical implications, and laws applied. It is such a beautiful book which would
stand as a lighthouse for all the students of law, politics, and many others. I would like to take this moment and request the dignitaries if they can give us a beautiful photograph on the occasion of this function. A big round of applause, my friends. Thank you very much, Advocate Jai Bhavi ji, for coming up with such a beautiful book. And I now request him to kindly come forward and address the gathering. Hi, Mike. Respected dais, my close friend Rahulji Karar, the other dignitaries on the dais, Shri Shyam Jajuji, former National President of the BJP, Honorable Dr. Agrawal, a former Chairman of UGC, Shri Upadhyay ji, his book we have just released here. All other dignitaries from the MIT school and the student friends. It's indeed privilege to have on this dais. My family is longly associated with great Professor Dr. Vishwanath Kararji, and we are known from my father's time, right from his establishment of this MIT college, and then all his contribution to the education and the social life of the Maharashtra. So kindly convey my vandan to Dr. Saab. It's a very innovative concept of this Master Political Leadership and Government program. I represent the Bar Council of India, where we govern the legal education. And we are in a process of changing the entire legal education because the time has changed. And law must be relevant to the time. It's like a dynamic concept. And in this changing concept of the law, this particular function has added one new vision for me to also think of a political leadership which should be shaped with the proper legal concepts. And while dealing with that, Rahulji, definitely I put this concept on the floor of Legal Education Committee of the nation. I will come to the conceptual part of this program, that the political leader must be a trained personality. The mode of training, one course is there. Ultimately, a real training for any human being is a society. And just now we had a film where that great program in last 2 years back, where near about 1715 the representatives of the Legislative Assembly was gathered here. And it was shown that the heart of the democracy is the Constitution, but another word was used there, that if Constitution is Atma, Samvad is a Dhadkan. And I'm on this point, friends. Dialogue and Samvad, which should be the prime quality of any personality who want to enter into a political field.
there are three pillars of the Constitution. All speakers have touched. One is lawmakers, one who represents the different assemblies. Another is the judiciary, and one is the executive. These are the three pillars, and all the representatives of the three pillars are there on a dais. The another fourth pillar is of media, and they are like a watchdog. This concept of the democracy is rightly incorporated in the first preamble of the Constitution. And if that preamble is properly understood by any person, in whatever field he wants to work, first of all, he should be a good human being and he should be a good citizen. Then he can contribute in any field of the profession, right from any professional field up to the political field. These two basic qualities are required. He must be a good human being and he must be a good citizen. In this process, when this preamble was made, there are parliamentary debates. And this parliamentary debate will give you a different vision. If you study these parliamentary debates of making of the Constitution, that will give you a different spirit in your profession, in any profession. And particularly when you are thinking of developing your career as a political leadership, the most important document you should study is not only the Constitution, but the parliamentary debates, how the Constitution was made, and the historical background of that Constitution. So 4 words are important, friends. It started with "we the people of India." Where from this word is coming in this preamble should be your query. And as a person coming from this particular course of a political leadership, you should have a vision of the democratic evolution of the world. 400 years when the America was creating their constitution, a famous poet has written one poem, "We the People of America." And that was the base on the basis of which the entire evolution of a democracy was created in USA. When our constitution was in process of making, lot of debate went how we should start the constitution. Somebody said that in the name of God, somebody said that in the name of Bapuji, somebody said this name, that name. Ultimately, Pandit Jawaharlal Nehru has read that poem and said that we the people of India are creating our own future. So let us start with "we the people of India." So everything is for the people, by the people. And that gives the another meaning to the another word in the preamble. That is democracy. The definition of a democracy is the rule by the people, for the people. A simple definition is there. Another 3 words are there. One is secular, then it is socialist, and then it is republic. You must have read, and you must think of the meaning of this particular, proper interpretation should be in your mind. So about the secularism, secular state, and the word secularism, a lot of debates are going on. A lot of petitions comes to the Supreme Court. Recently, there was a petition that secular word should be removed. It was rejected by the Supreme Court. So what is expected by the word secular? Does it mean that no religious concept? Then what about your fundamental right as a religion? You go to Article 25, 26, 27 of the Constitution and you will find there is a fundamental right of the religion. Then what is this word secular? The simple definition which should be in your mind of the word secular, and as a political leader and a student of the political science or a citizen, you should have that clear concept. You have all the independence to follow your own religious concept. But the state will not have a religious concept. The state will not be run
or govern on the basis of the religious concept. That's the word, that's the meaning of the word secular. Socialist, you know the political meaning. And another important word is there, which should be very well studied by you peoples. And that word is republic. We call it as a Ganatantra. What is your concept of this word republic? Because you are going to be a strength of the political system of this country. Why this particular word republic is used? And another word, sovereign, is used. You must have the background of the English democracy, that English democracy is not a sovereign democracy. Correct? Why? Any answer? Why it is not sovereign? You should have that query. Why the sovereign word is used? English democracy is the oldest democracy, but it is not sovereign because above the democracy there is a king and there is a queen. So Indian democracy is such a democracy that above this democracy there is nobody, no external force is there who will control the democracy of the India, and therefore the word used is sovereign. It is a sovereign body. And then republic. The republic word represents that the true political meaning of the word republic is that the leadership of this democracy will be created and established only by the election process and no appointments. No person directly coming and becoming a head of the country. He will be elected by election process. The meaning of the word republic is therefore important. Dr. Babasaheb Ambedkar, we called him as a father of the Constitution. He created a political party. And his political party's name was the Republican Party of India, RPI. With that philosophical meaning of the word republic, he established that political party. So friends, this conceptual aspect and the spirit of the Constitution is the most important subject to develop you as a human being, citizen, and of course a political person. And therefore, I will make an appeal to learn the democracy, understand the democracy. Few days back, the Chief Justice of India, Dr. D.Y. Chandrachud, made one statement. You must have read. Failure of democracy in this country is because of the illiteracy of the Constitution. We suppose that there is a knowledge of the Constitution, but in fact we are illiterate. We don't understand the constitutional spirit. We understand some of the words. We read some of the word. But the real interpretation of that word, we are not understood, and therefore certain misconception of the democracy and mismanagement and misconducts of the democracy are going on. Rahul ji has expressed some of the feeling. The words of wisdom of Dr. Agrawal has also expressed some of the feeling. And the political leadership is the most important profession, I will say. You see the other profession, and that should be followed in a political leadership profession also. That's my own concept. When I become a lawyer, my own community people used to come me, relatives, and they used to ask, I have this work. Can you suggest me a good lawyer? They used to come and I used to suggest that he is a good lawyer. They don't hand over the brief to me because though I belong to their own community. If you go to the doctors, still, if I had a heart problem, I will not see that who is my relative, who is my caste person, who is my religion person. I will see who is a top person, who is a skillful man, whose knowledge is great. If this is the situation in all other professions, why it should not be transformed in a political profession? And therefore that should be the concept, and therefore I congratulate you, Rahul ji, that this mission of creating that professional perception on a political leadership you have started. And
when you have decided to come in this particular profession, friends, you should always keen to understand the importance of the dialogue. I will suggest, sir, that we should have one debate competition on a political ideology. The person should choose the political careers on the basis of ideology. What is an ideology? What is a socialist ideology? What is a BJP ideology? What is the ideology of a Congress? What is the ideology of a communist, Shiv Sena? All should be before them to the youngsters. And that importance, if you want to understood properly, just one lecture, one speech is important in the history of the Constitution, making of the Constitution, and the speech which has given us a Ghatnakar, the father of the Constitution, Dr. Babasaheb Ambedkar. And I will explain you that. There was a decision to create a Constituent Assembly, and the elections was held. And in this election, Dr. Babasaheb Ambedkar was defeated from Maharashtra. That is a history. All people knows that. Congress defeated Dr. Babasaheb Ambedkar with full strength. In that particular situation, Dr. Babasaheb Ambedkar, who was eagerly interested in contributing for making of Constitution, came from one minority constituency from Bengal, and he became part of that Constituent Assembly. The structure of assembly is like 400 near about members are there. 300 are from Congress, 76 are from Muslim League, some princely states are there, and some other ideological persons are there. And the first day came of a Constituent Assembly. It was 14th December 1946. Dr. Rajendra Prasad was elected as a president of that Constituent Assembly. And Muslim League, 76 members were elected. They boycotted that meeting. And because of that boycott, one of the stalwart personality of that time, Barrister Jaikar, he proposed one resolution. And he said that when 76 members have boycotted, and when we are going to create a democracy by constitution, we should respect and we should postpone this meeting. We should have a dialogue with a Muslim League person, and then we should go for a Constituent Assembly. The other Congress people were eager. They start shouting. There was chaos in the meeting, and Dr. Rajendra Prasad was confused. There was a list of the speakers. Till that time, Dr. Babasaheb Ambedkar was not a national hero. He was restricted to his limited work in the state of Maharashtra and some part of Bihar. His name was there as a speaker at 150 number. Because of great knowledge of Dr. Rajendra Prasad of the Indian society, he has heard Dr. Babasaheb Ambedkar on democracy, law, and other academic aspects. So when there was a chaos in that meeting, he got an idea that this is one speaker who will explain all these persons what is democracy. And from 150, he announced his name at number 1, Dr. Babasaheb Ambedkar. And the situation is like a film. Chaos is going, people are shouting, 300 people are shouting, through the Muslim League. We don't want to adjourn the meeting. We don't want to hear them. Samvad and a dialogue. And then Dr. Babasaheb Ambedkar started speaking, which is called as a maiden speech of democracy, one of the finest speeches on the floor of the democracy of the world. And he said that, friends, what is democracy? Is it a majority? No. Friends, democracy means not a majority. Democracy means respecting the minority by the majority. That was a thought given by Dr. Ambedkar of the dialogue.
Democracy means not a majority, and a democracy means respecting the minority should be a clear thought of every political person. There may be a minority. What is a minority, friends? One MP is elected with 2 lakhs votes, and another MP is defeated by 1,75,000 votes or 1,90,000 votes. Does it mean that 1,90,000 voters who supported that MPs are to be ignored in a democracy? No, it cannot be ignored. So democracy is that democracy. The civilized society is that society where pains of animal are also sensitively considered. That is a real civilized society. And a democracy is the civilized society. So democracy is that correct democracy where smallest voice of the opposed is also respected and given a consideration. This is a thought given by Dr. Ambedkar. This was one thought which has given him a status as a father of a constitution. Jawaharlal Nehru was the leader of the house. Rajendra Prasad was the leader of the house. Sardar Patel was the leader of the house. They said that yes, this is a man with an opposite ideology. He opposes Bapuji. He opposes Pandit Nehru. But he has all quality to make the constitution. And he said that he will be the chairman of the drafting committee. And the man of opposition ideology was given a chairmanship of the drafting committee of the constitution. The effect was, first list of 14 ministers was prepared by Pandit Jawaharlal Nehru and Sardar Patel. And they went to Bapuji. You should see the film prepared by the Rajya Sabha on completion of 50 years of the independence, directed by Shyam Benegal. Have you seen that, friends? You should see that. There are 10 episodes. You should see that all these parliamentary debates, which is not a story, every word is written word. It is a part of the proceeding of the parliament. On the basis of that film is there. And there you will find this scene. Jawaharlal Nehru and Sardar Patel are sitting with the 14 members, 14 ministers list before Bapuji. Bapuji going with charkha pissing chalu. Bapuji sir. Bapuji is not interested. And Jawaharlal says that Bapuji just have a look to the ministers. And Bapuji stops. He says that Jawaharlal, out of 14, how many opposition persons in a ministry? Sardar Patel says that no, Bapuji, we have a full majority. There is no question of any opposition in the ministry. Then Bapuji laughs and says, then Jawaharlal, you have not understood the real meaning of a democracy explained by Dr. Ambedkar on that 14th December. He may be our opponent, but he rightly said that you have to respect the minority. If you ask me, half of the ministers should be of opposition and half should be of the Congress. Ultimately, you are a leader. I am not a member of your Congress party, because Bapuji was not a member of a Congress party. In fact, he suggested to dissolve the Congress party and create a new political party. Pandit Jawaharlal Nehru went back. Not 7, but 3 ministers of opposition was included in that list. Who are the ministers? All political parties should understood that and take some lesson from that. The most opponent of the Congress and creator of the Vishwa Hindu Parishad, Shyama Prasad Mukherjee, was made a industry ministry, one of the most important ministry, industry ministry. Dr. Babasaheb Ambedkar, law minister. And one of the communist leader from Bengal, defense minister. 3 oppositions. Today, if we say that we are in a civilized society and we are completing 75 years of the constitution and a democracy is elevated, then oppositions are treated like enemies is not a good sign of a civilized society. That is completely opposed to the thought given by the Dr. Ambedkar. And therefore, it's a great effort of Rahul Karad that Karad sir brought all these people together and have a bond with them
Sir, it was not your concept of bringing one event. It was a concept of respecting that basic concept of the democracy, respecting each other, respecting the ideology, and having a dialogue, and taking your agenda, taking your thought ahead. I think that should be the situation. When this situation will come, perhaps the people will think that he is the right person. People will not think that he is from my community, he is from my caste. You should perform well. You should be a knowledgeable person. You should be full of history. And history, people talks about the history in an emotional manner. Some of you must not be knowing a Marathi, but one of the Marathi poet has written very few 4 lines of the history. उपाध्याय साहेबांना माहिती असेल, विंदा करंदीकर इतिहासाच्या बाबत असं म्हणतात की इतिहासाचं अवजड ओझं डोक्यावर घेऊन ना नाचा, करा पदस्थल त्याचे आणि चढून त्यावर भविष्य वाचा. History should be understood, history should be studied. It should not be taken on your heads only. You should go on the history, study it, and create your own future. That is a real interpretation of the history, friends. So all this history is written in the parliamentary debates. Further, all these aspects of the parliamentary debates are discussed in the various case laws. I have written a book, and I'm giving, sir, I will be giving you 50 books from my side. Rest you can purchase, of course, at cost. Because as a lawyer, I feel that Supreme Court and the High Court and their judgments is the law of the land. One case, Keshavananda Bharati versus Union of India. 66 days episode. उपाध्याय साहेब याच्यावर जर सिनेमा काढला ना तर शोलेपेक्षा प्रसिद्ध होईल, एवढा त्याचा ड्रामा आहे त्या पर्टिक्युलर घटनेमध्ये. 66 days everything is there. How the judges are appointed, how the arguments are there, what arguments are done by Nani Palkhiwala, what arguments are done by the Sirvai, and what is the conclusion? Conclusion is that there is a basic structure of the constitution. You can't change that. Anybody get 400 MPs, he can't change the basic structure. It's the law of the land. And what is these basic structures? You should understand. Simple thing, friends. It is written in a constitution that after 5 years, there should be elections of the parliament. If my party gets 500 seats, and I decides, अरे मैं ही चुन के आता हूँ बार-बार, ये 5 साल का क्यों खर्चा करने का? Let us change 5 years, make it amendment 50 years. Out of 5, 50 years. Supreme Court said, no, friends, the concept is of a republic state. Repeated elections, that your amendment of making 5 to 50 will be unconstitutional because it is against the basic principle of basic structure of the constitution. This is given by Keshavananda Bharati. Many other ingredients they have given. Then came the another one important case, very important case. We talk about the fundamental rights. What is this fundamental right? In emergency, Indira Gandhi freezed all fundamental rights. She said that there is a disturbance of the peace, emergency is applied, and all the oppositions are in jail. And she says that fundamental rights are seized. The matter went into the High Court. The matter went into Supreme Court. And the matter came in the case of ADM Jabalpur versus Shukla. That is another case. Famous case, and very important and interesting on the fundamental rights. The argument of government was that, what is this fundamental right? We the parliament, we the government created this fundamental right. Who created the constitution? We created. We are the creators. So if we are the creator, we can seize it. So 5 judges was there. There was a lot of pressure of the government. Emergency period was there. And the pressurized judiciary, out of 5, 4 said that yes, government is right, because they were under pressure. And they were under pressure. 2 judges
out of that 4, at their age of 88, confessed that before dying, sir, professor of law must be knowing, before dying, I must confess that the judgment was absolutely incorrect and out of pressure. 4 judges said that government is right, because government says that we have created the fundamental right. Fundamental right is a gift given by the parliament to the citizens. And therefore we can take that fundamental right back. One strong judge was there. He did not succumb to the pressure of the government. And he said that, no, friends, sorry, I don't agree. I don't agree that fundamental right is a gift given by the parliament to the citizens. He said that fundamental right is available. What is fundamental right? Right of expression, right of feelings, right of thoughts. What are all these fundamental rights? They are available because the citizens are born as a human beings. And these are the inherent qualities of the human being: to express yourself, to have your thought, to have your expressions, feelings, whatever your human feelings are there. All these feelings are the fundamental right because they are the inherent qualities of the human being. And you can't say that you have gifted that. At the most, you have only endorsed by the Constitution. And therefore, I disagree that fundamental right is a gift given by the parliament. 4 versus 1. The judgment was against the common man and in favor of the government. It was a time of 1975. You can still go to the Google. The name of the judge was Justice H.R. Khanna. He has written his autobiography. And 3 days he blocked himself with his steno for dictating this judgment. And in the morning when he was going to the court for signing the judgment, he has written here that he sat with his wife and the daughter and said that while taking a cup of tea, he said that today I am going to sign a judgment which will take away the post of the Chief Justice of India from me, because he was the next Chief Justice. The government will not appoint me as the Chief Justice of India, but history will remember me. And he went and he signed that judgment. Friends, nobody has written at that time about H.R. Khanna. But you will find that next day, New York Times has written an editorial on Justice H.R. Khanna. That is there on a Google. And in that editorial, New York Times has said that if tomorrow the temple of a democracy in India will be established, on top of that temple, the name of Justice H.R. Khanna will be marked. And that is true. He was not appointed as the Chief Justice. Next day he resigned from the post of the Supreme Court judge. Many Chief Justices came. Still today we are talking of Justice H.R. Khanna. And that particular human quality makes the democracy elevated in our country. And therefore, friends, you should read this. My humble request is that you can't be a leader unless you know the sense of the society, unless you know the pains of the society. Dr. Ambedkar, on completing the Constitution on 26 November 1949, has again given one of the marvelous speech, whereas he has said that we are entering into an era of contradiction. Dr. Ambedkar says that we are entering, by accepting the Constitution now and democracy, we are entering an era of contradiction. Contradiction because on one side, irrespective of your caste, your economical status, one vote is available to everybody. And on another side, there is a vast difference of the social, economical aspects and the status of the human being. One may have thousands of crore and one may do not have a food to eat. And therefore, this is the era of self-contradiction. When this constitution will be used and it will go to the hands of the political persons, how good that persons are, that will decide the fate of the country. So we should try to eliminate this discrimination
The day we will eliminate this discrimination, the democracy of this country will be successful. So friends, how this discrimination can be eliminated? Is it a situation that today still this self-contradictory situation is not there? It is said that 5% of the rich persons of the country are holding 70% of the wealth, and another 95% do not have the proper shelters also. Though we have made certain, definitely in last 75 years, we have made certain developments. Still we are making a development, we are making ourselves as a good power. Still, the political leadership must be very visionary. They must be very professionals. He may be educated, he may not be educated. The Chief Minister of the state, Vasantdada Patil, was an uneducated person. But the most dynamic development for the states are done by Vasantdada Patil, and therefore whether you are educated or uneducated is not important. Whether you are cultured, whether you are a human being, whether you understand the democracy and the democratic principle of a constitution is more important, Your Honor. So my humble request to all of you will be that try to understand the spirit of the democracy. When if you are going to be a political leaders of this country, you should equally spiritual towards the democracy, that all spiritual aspects you will get from the great debates of the parliament, you will get from the various important judgments of the Supreme Court, and of course you will have to see the society with a full open heart, without prejudices and without any ideological barriers in your mind. When you will do that, you will be a successful leader of this particular Indian democracy. I am a pleader, and there is very close relationship between the pleader and leader. Only P is to be removed. We have to argue for the justice, and leaders have to argue for the justice of the democracy. I hope that you will make yourself a perfect personality to argue for the democracy of this country and to give the justice to the common man. Thank you very much, and thank you, Rahul sir, for giving me a great opportunity. Thank you, sir. Thank you very much, Advocate Jai Bhavi ji. Thank you very much for, literally when we were listening to your address, we could live the history, we could live the moment that you are narrating to all of us, and we could really see the way Dr. Babasaheb Ambedkar might have addressed the gathering that day. Thank you very much for bringing history in front of our eyes and making us realize that. Thank you very much. My friends, it's now time that we move forward to an important moment in this gathering. We are proud to reflect on MIT SOG's growing global engagements in leadership education. We are delighted to unveil a report of the International Capacity Enhancement Program held at the National Conference of State Legislatures, NCSL 2025 in Boston, United States of America. A landmark initiative of Dr. Rahul Vishwanath Karad that provided our leaders a unique opportunity to interact with the lawmakers, policy experts and governors, professionals across the world. Let's give a big round of applause, my friends, as we unveil the report of International Capacity Enhancement Program. Thank you. And now I would like to invite the student of MIT School of Government, P.V. Chakradhar from Andhra Pradesh, to abide all the students of MPG Batch 21 by an oath. I would like to request all the students, the newly inducted students of SOG, to rise in their seats. You all are now going to receive an oath. I would like to request all of you to please put your right hand side forward and follow after Mr. P.V. Chakradhar. Good morning, all. I solemnly pledge to uphold the values of democracy, peace, and ethical politics.
I will stand firmly against corruption, casteism, and communalism, and criminalization in public life, act responsibly to combat climate change, and free my mind from colonial attitudes. With faith in Bharat's democratic institutions and commitment to good governance, I promise to build a just, inclusive, and progressive society leading towards world peace. Jai Hind. Thank you very much. You can now accept your chairs. And remember every single word that we've just accepted as part of oath. Thank you very much. My friends, it is now moment where we unveil the report of MIT School of Government. I would like to request once again, all the dignitaries on the dais that they unveil an important document of MIT School of Government, the academic report and brochure. A big round of applause, my friends. Thank you very much. And now it is indeed my honor and privilege to invite the special guest of honor of this session, Shri Shyam Jaju ji. But before I do that, I would like to request my technical team to kindly relay a film. Is one who embeds leadership in others. This belief has guided Shri Shyam Jaju throughout his journey in public service. From his early years in Sangamner, Maharashtra, he dedicated himself to the principles of dedication, leadership, and service. His engagement with the Rashtriya Swayamsevak Sangh and the Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad helped him to become a young leader committed to values, action, and community. Over the decades, Shri Jaju has created strong teams, mentored emerging leaders, and strengthened institutions. In the Bharatiya Janata Party, he rose through key roles from district president to office secretary at the party headquarters and ultimately national vice president. Throughout his career, he combined planning and execution with mentoring the leaders of tomorrow. Recognized for his dedication with honors like the Bharat Kirtiman Alankar, Shri Jaju's work reflects a life committed to public service, justice, and empowerment. His working approach shows that leadership is not measured by position alone, but by the impact on others and the communities one serves. Today, as he joins us for the MIT School of Government's 21st commencement ceremony, we honor a leader who epitomizes our institution's principles such as leading, mentoring, and motivating future leaders. Please put your hands together, my friends, and welcome with a big round of applause, Shri Shyam Jaju ji. Welcome, sir. आज के इस उद्घाटन सेशन में 4 स्पीच सुनने के बाद मेरा 5वां है। नीचे बैठे हुए लोगों के चेहरे में देख रहा हूँ और राजनीति में काम करने वाले आदमी को अगले के चेहरे पे क्या चल रहा है ये अगर ध्यान में नहीं आया तो वो राजनीति में काम करने लायक नहीं है। सबको लगता है कि अभी लास्ट है, 4 सुन लिए, ये भी सुन लेंगे। और मुझे ऐसा लगा कि मैं आखिरी वक्ता हूँ, तो मैं और मेरे आगे कोई बोलने वाला नहीं है, तो मैं कितने भी देर बोला तो चलेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो भी संस्था के अनुशासन का पालन करते हुए मेरे आरक्षित टाइम पे मैं मेरा पूरा करूंगा। वैसे इस संस्था में राहुल जी ने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम आया हूं, मैं फर्स्ट टाइम नहीं आया, सेकंड टाइम आया हूं। एक बार पार्टी का ऐसा कार्यक्रम बना था कि भाई पार्टी के लोगों को, पार्टी के नेताओं को तो हम मिलते ही है, पार्टी के बाहर जो एजुकेशनिस्ट है, आध्यात्म के जगत में काम करने वाले लोग हैं,
इंडस्ट्रियलिस्ट है, सामाजिक कार्यकर्ता है, वो हमारे पार्टी के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके पास क्या सजेशन है हमारे लिए, हमारा क्या चल रहा है वो पेपर में पढ़ेंगे, न्यूज़ में देखेंगे। हम जाकर प्रत्यक्ष उनको बात करेंगे, आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे पर उनकी सलाह लेंगे। ऐसी कैटेगरी में जब संपर्क योजना बनी तो मैंने अध्यात्म जगत के और एजुकेशन फील्ड के कई लोगों के नाम मेरे पास थे। श्री श्री रविशंकर जी को मैं मिला, कोयम्बतूर के सदगुरु जी को मिला, हरिद्वार में अवधेशानंद जी को मिला, ऋषिकेश में चिदानंद जी को मिला और पूना में बाबूजी विश्वनाथ कराड़ जी को मिलने के लिए मैं आया था। और पार्टी का क्या चल रहा है, आप लोग क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में, इसलिए उस टाइम मैं फर्स्ट टाइम आया था और आज इस मंडपम में नीचे आपके साथ बैठा हूँ। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैंने बहुत लोगों को भेजा है, जो भी लोग जाते थे तो दिल्ली में आ रहे श्याम जाजू। मेरा दो स्वार्थ है, एक तो जिन जिन को मैंने फ़ोन करके इधर भेजा वो आदमी वापस आकर मुझे बोलते थे कि आपने एक अच्छे इंस्टीट्यूट में हमें भेजा, बहुत अच्छे माहौल में कार्यक्रम हुआ। और वो ये 4 लोगों को जब कहते थे तो ये राहुल जी को मैंने आज कहा कि कई लोग मेरे पास आते थे, अच्छा श्याम जाजू जी का बड़े अच्छे संस्थाओं में संबंध है, भाई साहब अगले साल हमारा भी नंबर लगाओ, हमें भी उसमें सजेस्ट करो, हमें भी जाना है। तो ये संस्था का रेप्यूटेशन है, इसलिए नाम एजुकेशन फील्ड में कितनी बड़ी क्रांति की, कितने स्टूडेंट आपके पास पढ़ रहे हैं। अब ये भी जो कंसेप्ट है ये नया कंसेप्ट है। आज पहली बार मैं एंट्री करती, मैं भी प्रार्थना के लिए रुक गया जगह पे। यहाँ मैंने भी, यहाँ सब धर्मों का यहाँ पर आदर हो रहा है, पर सेंटर में राम जी को रखा है, ज्ञानेश्वर महाराज की आरती की है। लोकतंत्र का जो डोर है वो कोई 2, 4, 5 लोग नहीं खींचेंगे, सब लोग खींचेंगे और उसका उद्घाटन होगा। एक टाइम ऐसा था देश में जब दीप प्रज्वलन बंद हो गया था, रिबन काटना यानी उद्घाटन। धीरे धीरे सनातन वालों ने, यारे रिबन काटने का विरोध नहीं है, पर हमारी परंपरा दीप प्रज्वलन करने की है, वो वापस एस्टेब्लिश हुआ। तो ये सब बातें ये बताती है, सर्वधर्मों का यहाँ पर प्रदर्शन रखा है, पर अपने धर्म का भी अपमान नहीं हो रहा है। तो इसलिए ऐसे संस्था में आना, इसलिए मैं आप सबके सामने आया हूँ। राहुल जी ने जो कंसेप्ट बनाई है, हम जब छोटे थे, मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। पहले 4-5 बच्चे होते थे, अब तो वो जमाना खत्म हो गया। एक आदमी को 4 बच्चे थे। वो दूसरा मित्र जब मिला तो पूछा, भाई तेरा कैसे चल रहा है? बोले मेरा बड़ा बेटा होशियार था, वो डॉक्टर बन गया। दूसरा थोड़ा कम था, वो इंजीनियर। तीसरा उससे भी कम बुद्धि चलती थी, वो टीचर बना। और चौथे का बोले दिमाग नहीं चल रहा था, उसको राजनीति में डाल दिया। यानी राजनीति ये जिसको कुछ नहीं आता उसको काम करने की जगह है, ऐसा समाज में एस्टेब्लिश हो गया था। पॉलिटिक्स इज ए डर्टी गेम, ऐसा बोला जाता था। अच्छे लोगों का काम नहीं है। पॉलिटिक्स में काम करने वालों ने बनाया होगा या समाज में वैसा माहौल होगा। राहुल जी ने वो सोचा, जिनके पास समाज का नेतृत्व करने का काम देना है, जिनको समाज के बारे में चिंतन करना है, जिनकी धारणा से समाज चलने वाला है, समाज के डिसीजन मेकिंग में जिनका बड़ा रोल रहने वाला है, ऐसे लोग कैसे ही अनकल्टिवेटेड, अनस्किल्ड, पढ़े लिखे नहीं है, कुछ मालूम नहीं है और आगे चुन के, ये नहीं चलेगा। भारत के लोकतंत्र का, विश्व में सबसे बड़ा लोकतंत्र का उदाहरण अगर विश्व में प्रस्तुत करना होगा तो वहां भी रिप्रेजेंट करने वाले, उस क्षेत्र में काम करने वाले, जैसे अच्छे वकील चाहिए तो कोर्ट की इज्जत है। अभी HR खन्ना जी का आपने सुना कि खड़े रह के किया, त्याग दिया, चीफ जस्टिस नहीं बन सके, पर इतिहास में आज भी जय भाई जी उनका नाम ले रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इस प्रकार का कोर्स बनाकर, करिकुलम बनाकर, थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल दोनों बातें लोगों को सीखनी चाहिए। उनको अलग अलग नेताओं को मिलना चाहिए, बड़े बड़े इस प्रकार के फंक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए, तो ये इस देश की लीडरशिप तैयार होगी। इसलिए इस प्रकार का करिकुलम बना। संसद का जो प्रभाव है, पॉलिटिकल फील्ड का जो प्रभाव है, हम नकार नहीं सकते। सोच का प्रभाव व्यक्तित्व पर परिलक्षित होता है। कोई भी आदमी व्यवहार करता है तो एक दिन में, एक रात में कोई कैरेक्टर नहीं बनता। कैरेक्टर बनने की एक प्रक्रिया है। उसका जीवन, उसका परिवार, उसका परिवेश जिस प्रकार से होता है, उसके टीचर, वो जिस संस्था में पढ़ता है, उसका माहौल, समाज का, ये सब प्रभाव होता है। कैरेक्टर के बारे में विवेकानंद जी का
बड़ा उल्लेख होता है इस संस्था में। विवेकानंद जी शिकागो में जब धर्म परिषद के लिए गए, सुबह जब मॉर्निंग वॉक के लिए निकले, उनके सैफरन पहराव हम सबको परिचित है, तो वहाँ लोगों को ये परिचित मालूम नहीं, वहाँ सूट बूट में रहने की आदत है। एक कपल जब नज़दीक से जा रहा था तो कपल को लगा क्या रे ये कैसे कपड़े पहना है, वो बोले ओ सी दैट पर्सन हाउ फनी ही लुक्स। विवेकानंद जी ने वो सुना, उन्होंने बोला मैडम रुकिए, मैडम यू आर फ्रॉम द कंट्री वेयर टेलर मेक्स मैन जेंटलमैन, आई एम फ्रॉम द कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स मैन जेंटलमैन। मैं उस देश से आता हूं और ये कैरेक्टर एक दिन में तैयार नहीं होता। मैं तो मेरा उल्लेख किया कि मैं देश के राष्ट्रीय पार्टियों में सबसे ज़्यादा कार्यकाल जो हेडक्वार्टर इंचार्ज रहा इस समय हूँ, 11-12 साल उस कार्यकाल में मुझे रहने को मिला। बहुत नेताओं को देखने को मिला, अलग अलग पार्टियों के भी नेताओं को देखने को मिला। ऐसी कई बातें मेरे ध्यान में आती है कि उस नेता ने उस टाइम जो व्यवहार किया, ये उसका व्यवहार, उसका स्वभाव, उसका जिस प्रकार का चरित्र है वो परिलक्षित करता है। अटल जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो अटल जी के घर में पंचवटी हॉल में एक कार्यक्रम था। अटल जी को जिन्होंने आरएसएस में लाया, ऐसे तर्टी जी जो संघ के प्रचारक थे, उनका सम्मान का कार्यक्रम रखा था। तर्टी जी की एज उस टाइम थी 94। अटल जी के साथ वाले कुर्सी पर वो बैठे थे, गुरु पूर्णिमा का दिन था, तीसरी लाइन में मैं भी बैठा था। तर्टी जी अब एज वाइज सीनियर होने के कारण वो माइक पकड़ने की स्थिति में नहीं थे, बैठे बैठे बोल रहे थे, माइक ऐसा ऐसा हिल रहा था, वो लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। अटल जी को तुरंत ध्यान में आया, अरे लोगों को सुनने में कोई कठिनाई हो रही है। देश का प्रधानमंत्री एक 94 इयर्स के बूढ़े का, जिसका कोई व्यक्तित्व नहीं, कोई प्रतिष्ठा नहीं उस टाइप की, उनका माइक पकड़ रहा है, कॉर्डलेस माइक, और पूरा ऑडियंस सुन रहा है और पूरा देश का मीडिया देख रहा है। ये है अटल जी। अब ये एकदम बना क्या, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये मीडिया के लिए किया क्या? नहीं, ये उनका कैरेक्टर परिलक्षित करता है। मोदी जी के साथ जब मैं केदारनाथ गया तो केदारनाथ का उस दिन कपाट खुलने थे। कपाट खुलने के पहले आम आदमी को अभिषेक करने के लिए वहां की जो रसीद काटनी पड़ती है, मोदी जी ने पहली अपनी रसीद कटवाई और फिर वो हमारे साथ खड़े, हम उनके साथ खड़े रहे और अंदर मंदिर में प्रवेश किया। मैंने देखा भाई, देश का प्रधानमंत्री खुद की रसीद काट के इस मंदिर में प्रवेश करता है। जयपाल रेड्डी जी के पास मैं गया, वो कांग्रेस के थे, हाउसिंग कमेटी के, और जगह सब पॉलिटिकल पार्टीज को जगह अलॉट करने का काम उनके पास था। मेरे पहले कांग्रेस का डेलीगेशन बाहर निकल ही रहा था और मेरा एंट्री हुआ। जयपाल रेड्डी जी कांग्रेस के थे, मंत्री थे। मेरे पास क्या शेयर किया उन्होंने, बोले देखो हमारी ये कांग्रेस वाले। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा है, जहां जगह देनी है सब पॉलिटिकल पार्टीज को, वो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग, और ये कांग्रेस वाले ये कहने आए हमें दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे जगह नहीं चाहिए क्योंकि वो संघ के और बीजेपी के है, हमारे एड्रेस में वो नाम आएगा, हमें दूसरे रोड पे जगह दो। बोले मैंने उनको समझाया, भाई नेहरू जी, गांधी जी, ये कोई एक पार्टी की प्रॉपर्टी है क्या? विवेकानंद जी कोई एक किसी विचारधारा की प्रॉपर्टी है क्या? दीनदयाल जी, जो लोग चले गए वो समाज की प्रॉपर्टी है, उसको हम छोटा क्यों कर रहे हैं? तो हमारी तो जगह वही है। तो फिर उन्होंने बोले कोने वाली जगह ली, इधर से दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आता है और उधर पंडित नेहरू मार्ग आता है। बोले हम एड्रेस में पंडित नेहरू का नाम लिखेंगे। ये जयपाल रेड्डी जी की सोच और मेरे जैसे छोटे आदमी से उन्होंने शेयर की। ये अपने आप बना क्या? वेंकैया नायडू जी इस कार्यक्रम में आए थे, इस संस्था के। वेंकैया जी एक कमेटी के चेयरमैन थे और उस कमेटी जो सेक्स एजुकेशन पर चेयरमैन, वो कमेटी के चेयरमैन थे। एक जैन मुनि को उनके सामने अपनी बात कहने के लिए आना था। जैन मुनि व्हीकल से प्रवास नहीं करते, पैदल प्रवास करके जब वो पार्लियामेंट में वो दूसरे दिन था, मेरे पास एक मैसेज आया। बोले मुनि जी पैदल चलते हैं, नॉनवेज खाते नहीं, शाकाहारी है और इस प्रकार का है, पर उनको पार्लियामेंट में जाना है और पार्लियामेंट की कमेटी के मीटिंग के बाद नाश्ते का जो वहाँ व्यवस्था होती है उसमें नॉनवेज भी रहता है। तो मुनि जी की विनंती है कि हमारे कमेटी का काम होने के बाद नॉनवेज ना रखा जाए। मैंने वेंकैया जी को कहा, वेंकैया जी ने कहा भाई मेरे कमेटी के बाद छोड़ो। हालांकि वेंकैया जी नॉनवेज खाने वाले थे। मेरे रिफ्रेशमेंट में तो नॉनवेज रहेगा नहीं। जिस दिन मुनि जी का पार्लियामेंट में पदार्पण होगा, हमारे कैंटीन में और पूरे परिसर में कहीं नॉनवेज नहीं होगा। ये उन्होंने किया
और कमेटी का चेयरमैन आगे बैठता है और जिनका सुनना है वो आगे बैठते हैं। तो उन्होंने अपने कमेटी को बोला, भाई जैन मुनि के आगे ऊपर मैं बैठूंगा और वो आगे, ये ठीक नहीं है। बोले नहीं साहब, यहाँ का प्रोटोकॉल ये कहता है कि आपको वहीं बैठना है। बोले एक काम करो, मैं तो यहीं बैठूंगा, मेरे से ऊंचा आसन तैयार करो जिस पर वो बैठेंगे। अब ये अपने आप आता है क्या? ये स्वभाव आदमी का बनता है। भैरव सिंह शेखावत जी के पास मैं एक बार गया और एक पश्चिम दिल्ली में एक एक्शन हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करना था। बड़े बड़े रिच करोड़पति लोग, अरबपति लोग मेरे पास आए। बोले भाई साहब, आपके भैरव सिंह जी से बहुत संबंध अच्छे हैं, जरा आप आए तो हमारा कार्यक्रम पक्का हो जाएगा। मैं गया तो भैरव सिंह जी ने क्या बोला? बोले मुझे मालूम है हॉस्पिटल बहुत बड़ा है, मुझे मालूम है ये सब बड़े लोग हैं, हॉस्पिटल भी बहुत समाज के काम आएगा। मुझे एक बात बताओ, मैं क्यों आऊं? अगर ये गरीबों के लिए उस हॉस्पिटल में कोई प्रावधान करेंगे तो मैं आऊंगा, अन्यथा मुझे ये एक हॉस्पिटल देश में बन रहा है, उसके लिए देश के उपराष्ट्रपति को जाने की जरूरत नहीं है। फिर उन्होंने, ये सब ट्रस्टियों ने कहा, यस हमारे एरिया में हम 2 ब्लॉक ऐसे रखेंगे जो गरीबों के लिए, बिलो पॉवर्टी लाइन के लिए खुले रहेंगे। फिर भैरव सिंह जी और मैं भी उनके साथ उस हॉस्पिटल के उद्घाटन में गया। ये 4-5 किस्से मैंने आपको इसलिए कहे कि जो चेयर पे बैठा हुआ आदमी है ना, वो एक रात में उसका कैरेक्टर नहीं बना, वो बनने की प्रक्रिया है। अभी वसंत दादा पाटिल का उल्लेख किया जय भाई जी ने, मुझे याद है वसंत दादा पाटिल इतने जमीनी आदमी थे। जब वो मुख्यमंत्री थे, देश में एक एफिशिएंट और कर्तृत्ववान मुख्यमंत्री के नाम की उनकी चर्चा देश में होती थी। अब राजनीतिक नेता के इर्द गिर्द ऐसे लोग तो रहते ही है जो उनकी स्तुति करते हैं, क्योंकि उनको उनका काम निकालना है। एक बार दादा को उनके सहयोगी लोगों ने बोला, दादा तुम्हारे जैसा पॉपुलर आदमी हिंदुस्तान में नहीं है। बोले क्यों? बोले आप जब जगते हो तो आप बाहर आते हो तो उसके पहले यहाँ भीड़ रहती है, और आप जब सोने जाते हो तो उसके बाद आधा घंटा भीड़ छटती नहीं है, इतने आप पॉपुलर है। दादा जमीनी आदमी थे, काम करने वाले थे। दादा ने बोला, भाई मैं ठीक समझ रहा हूँ, ये भीड़ मेरे पास नहीं है, मेरे चेयर पर जो ओहदा लगा है मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री के चेयर के पास भीड़ है। जिस टाइम मेरे इस चेयर पे बैठे बैठे मुझे अटैक आ जाएगा तो जो साइन करने के लिए पेपर वाला जो आदमी आया ना, वो आप तुरंत हॉस्पिटल जाओ, मेरा काम छोड़ दो, वो नहीं बोलेगा। वो बोलेगा मेरे इतने कागज पे साइन करो फिर एडमिट हो जाओ। ये काम के लिए लोग आए हुए लोग हैं, मेरे चेयर के पास है, वसंत दादा के पास नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के नेताओं को समाज चलाने के लिए, देश चलाने के लिए जिस प्रकार के गुणों की आवश्यकता है उसका कौन करेगा चिंता? अपने आप तैयार हो जाते हैं क्या? कई दिन पहले तक, अब मुझे मालूम है यहां बैठे हुए और जिस कोर्स के लिए आए हुए किसी के भी पिताजी एमपी नहीं है ना एमएलए है, पर सबके मन में आया यस हम करेंगे। इसके पहले तक, एक 10-20 साल पहले तक उस आदमी के घराने पक्के थे। बारामती की सीट इसी घराने में जाएगी, हमारे लोणी की सीट इसी घराने में जाएगी, कोपरगांव की सीट इसी परिवार में जाएगी, ग्वालियर की सीट इसी परिवार में। क्यों? सालों से एमपी के पेट घर में एमपी जन्म लेता था, एमएलए के घर में एमएलए जन्म लेता था, शुगर फैक्ट्री के कारखानदार के घर में उनका चेयरमैन जन्म लेता था। अब ये साबित हो गया, ये चेयर्स, ये सामाजिक संस्थाएं, ये एनजीओ किसकी बपौती नहीं है। मेरिट से लोग वहां पर जा सकते हैं, और मेरिट ये किसकी मोनोपोली नहीं है, वो डेवलप हो सकता है। हाँ, वो डेवलप करने के लिए राहुल जी जैसे लोग, ऐसे संस्थाएं जिनको विजन है, जिनको कुछ करने की है, कुछ न कुछ नई बातें। अब ये मैं इतने इवेंट आपके यहाँ देख रहा हूँ, वुमेन्स कॉन्फ्रेंस आपने की, सरपंचों को आप बुलाते हैं, छात्र संसद आपने की, पूरे देश के सभी पार्टियों के विधायकों को आपने बुलाया, विदेश में जाके भी आपने की। यानी कैसे बड़े दायरे है। पॉलिटिकल पार्टी का आदमी का अपनी चुनाव तक तो पार्टी है, चुनाव के बाद क्या पार्टी? आपको लोगों ने प्रतिनिधि के रूप में पार्टी के काम के लिए नहीं जीता, पार्टी के लिए पदाधिकारी है पार्टी के, आपको देश के लिए दायित्व दिया है। वो कब होगा? जब हम मिलेंगे ही नहीं दो पार्टी के लोग, हमारे में कैसे तालमेल होगा? तो विपक्ष वाला गाली देता रहेगा, अरे श्याम जाजू शत्रु है मुसलमानों का, और मुसलमानों कहेंगे अरे उनके घर में नहीं जाना, मुझे कहेंगे वो लोग बड़े खराब है। अरे भाई, जब तक लोग इकट्ठा आएंगे नहीं, एक दूसरे को देखेंगे नहीं, तो कैसे चलेगा? तो मुझे ऐसा लगा भारत के लोकतंत्र, केवल भारत तक नहीं,
आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार की टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रहा है, हमारी सब समस्याओं पर हमारे पास आंसर्स है। और इस देश में ट्रंप को पहले दिन ये लगा और रात में दूसरे दिन सपने में दूसरी बात आ गई, तो ट्रंप उसको कोई क्यों बोलना, क्या बोलना, कौन से आवाज में बोलना, इसके कोई प्रोज एंड कॉन्स नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं चलता है। हिंदुस्तान में अगर किसी ने इमरजेंसी लाई तो उसको रोकने के लिए कोर्ट है, उस पर रिएक्ट करने के लिए लोग हैं, जेलों में जाने वाले कार्यकर्ता है, और डेमोक्रेसी जीवित रखने की ताकत हिंदुस्तान के आम आदमी में है। जब पूरे देश की सरकारी रिपोर्ट ये कह रहे थे कांग्रेस ही जीतने वाली है, इसलिए चुनाव डिक्लेयर हुए, और सामान्य आदमी, अनपढ़ आदमी, देहातों में रहने वाले लोग हरा दिया, देश के प्रधानमंत्री को भी हरा दिया और बता दिया नो, ये डेमोक्रेसी की खूबी है, ये रौनक है भारत के डेमोक्रेसी की। और आज तो पूरे विश्व में जब अमेरिका अपने अंतर्गत मतभेदों से अमेरिका के लोग अमेरिका के नेतृत्व को और विश्व के लोग अमेरिका के नेतृत्व को ऊब चुके हैं, यूरोप अपने में उलझा हुआ है, रशिया की कभी विश्वसनीयता रही नहीं है, ऐसे टाइम भारत के लीडरशिप की लोग वेट कर रहे हैं। वो लीडरशिप इस प्रकार के माहौल से ही जा सकती है। जब संवेदनशील, मुझे बताओ, अच्छी दुकान चलाने के लिए अच्छी उसकी सचोटी चाहिए, उसको व्यवहार आना चाहिए, उसके संबंध अच्छे होने चाहिए, अच्छे डॉक्टर्स का आकलन अच्छा होना चाहिए, उसका स्टडी अच्छा होना चाहिए, अच्छे लेखक को, उपाध्याय जैसे लेखकों को अपना व्यासंग होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई होनी चाहिए, उसके सिवा उनकी किताबें कौन पढ़ेगा। ऐसे ही राजनीति में और सामाजिक जीवन में काम करने वाले सभी लोग, इनको भी अपने को मोल्ड करने के लिए, अपना खुद का आकलन करने के लिए, उसमें आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार के इंस्टीट्यूट्स की आवश्यकता है। यहाँ आदमी तैयार होगा। और मुझे ये कोई, मैं गलत बात नहीं बता रहा हूँ, जैसे हमारे पास बायोडेटा आते हैं, बायोडेटा में लोग लिखते हैं मैं इतने साल का पुराना कार्यकर्ता, मैंने इतने बार जेल गया, मैंने इतना एजिटेशन किया। धीरे धीरे लोग उसमें लिखेंगे मैंने MIT का SOG कोर्स भी किया है इतने साल में। ये लिखना पड़ेगा उसको, यस आई एम फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूशन। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में असंभव कुछ नहीं है। जब कोरोना पीरियड में पूरे विश्व में चर्चा चली थी कि भारत की पॉपुलेशन, भारत का इतना वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत के पास डॉक्टर नहीं है और कैसे होगा इस देश का, उस टाइम हमारे देश के विल पावर वाले प्रधानमंत्री जी ने कहा कि नो, हम इस पर मात करेंगे, कलेक्टिवली करेंगे, हमारे पास ताकत है, हमारे पास संवेदना है। लोग निकले पैदल, दिल्ली से भी निकले, मुंबई से निकले, रास्ते में लोगों ने, कोई कानून नहीं निकला, मिलिट्री एक्शन नहीं हुआ, पुलिस को नहीं बोलना पड़ा, लोगों ने उनको खाना खिलाया, लोगों को उनको जाने का रास्ता दिया। हमने ऐसा टेक्नोलॉजी डेवलप किया, हमने कोरोना को भी कंट्रोल किया। और जो विश्व शांति की बात हम करते हैं ना, वो व्यवहार में झलकी। मोदी जी ने अपने देश को जितना वैक्सीनेशन चाहिए वो छोड़कर 108 देशों को एक्स्ट्रा वैक्सीनेशन अपने खर्चे से पहुंचाया, 1 रुपया भी लिया नहीं। क्यों? यह विश्वची माझे घर, हम विश्वगुरु जो बनना है ना, तो हमारा पड़ोस वाला भी दुखी है और मेरे पास कुछ मदद करने लायक है तो मैं करूंगा, ये हमने करके दिखाया। UPI कार्ड के आधार पर पेमेंट सिस्टम, बाहर के लोग आते हैं देखते, अरे यहाँ चाय पीकर लोग UPI से पेमेंट कर रहे, मूंगफली वाले, सब्जी वाले, ये क्रांतिकारी परिवर्तन, टेक्नोलॉजिकल परिवर्तन हमने कर दिया। इतने करोड़ों लोगों को अकाउंट हमने खोल दिए, डिजिटल ट्रांसफर पैसे करके, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करके 1 रुपया भी करप्शन नहीं होता है। जिस होती थी वो देश में हमने ये प्रूव करके बता दिया। आधार के बगैर आधार कार्ड कोई भी हमारा इस सभागार में भी आदमी नहीं है, वो आधार कार्ड का हमने सिद्ध किया। लोगों को लगा रहे 140 करोड़ का देश कैसे होगा, करके दिखाया। तो विल पावर, तकनीक का उपयोग पारदर्शी और कुशलता के साथ जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये सब बातें होती है। शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है, उसको निभाना। अभी आने वाले दिनों में केवल सैनिकी अटैक हुआ, विचारधारा का अटैक हुआ, इससे काम नहीं चलेगा। तकनीक, स्वास्थ्य, जलवायु और आर्थिकी, सभी मुद्दों पर नेतृत्व करने वाले लोगों की इस देश में आवश्यकता है।
इतिहास हमेशा मौके की कसौटी पर नेता को, राष्ट्र को परखता है। अभी चर्चा कर रहे थे कि इतिहास केवल किताबें लेके नाचना नहीं होता है, इतिहास से बोध लेकर आगे का रास्ता तय करना होता है। मुझे ऐसा लगता है आने वाले दिनों में विचार, नवाचार और डिजिटल ऊर्जा के स्रोत के माध्यम से पूरे विश्व का नेतृत्व करने का काम हमें मिलने वाला है। इस देश के नागरिकों को अपना दायरा बहुत बड़ा होने वाला है। अब वो भारत नहीं रहा जो पुराना था, एक टाइम कटोरा लेकर विदेशों में जाता था, वो भारत नहीं है। ये 2025 का भारत है। ये सर्जिकल स्ट्राइक से भी लोगों को मालूम है, ये सिंदूर ऑपरेशन से भी लोगों को मालूम है। तो उस भारत के हम नागरिक हैं। पुराने जो जनरेशन है ना, जो स्वातंत्र्य के लड़ाई के पहले जन्म लिया, उस टाइम तक क्या था, देश के लिए मरना ये देशभक्ति थी। अब आजादी के बाद देश के लिए जीना, अच्छी तरह से जीना और अपना ज्यादा से ज्यादा योगदान उसमें देना, ये देशभक्ति है। उस देशभक्ति के माहौल में इतने अच्छे संस्था में पढ़ने का मौका हमें मिला है। हमने ये करियर करना चूज किया है। छात्राएं भी यहाँ बहुत अच्छी संख्या में दिख रही है। छात्राओं का भी बिल राजनीतिक पार्टिसिपेशन का इसी मोदी जी के कार्यकाल में पारित हुआ है। तो मुझे ऐसा लगा कि हम सब भाग्यवान लोग हैं। तो ऐसे भाग्यवान लोगों को अपने जीवन का, कोई एमपी बनेगा, कोई एमएलए बनेगा, कोई एनजीओ चलाएगा, कोई अपने अपने क्षेत्र में अच्छा करेगा, केवल पॉलिटिकल चेयर मिली यानी बड़ा आदमी, ये बात सही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगा कि एक अच्छे कार्यक्रम में आज राहुल जी ने और उनके सब सहयोगी स्टाफ ने हमें बुलाया, आप सबके सामने प्रस्तुत होने का मौका दिया। इस प्रकार के कोर्सेज की आवश्यकता है और आप सब लोगों ने इसका चयन किया है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना देते हुए ये 21वीं भी बैच वापस जो आज तक का इस संस्था का रेपुटेशन है उसी प्रकार यशस्वी होगी। आप सबके जीवन में तरक्की आए, समृद्धि आए और आपका अच्छा करियर बने, आपका ब्राइट फ्यूचर बने, इतना कहकर मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ। नमस्कार। Thank you, sir. Thank you very much for your words of wisdom. Ladies and gentlemen, we now take a moment to experience the divine vision and spiritual lessons that from every soul of a university. Let us witness a short film on the philosopher Saint Shri Gyaneshwara World Peace Prayer Hall and World Peace Library, the World Peace Dome, the largest dome in this world, not by sanctum, by global harmony, interfaith dialogue and human unity. This magnificent creation stands as a living embodiment of the enlightened vision of our revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, the UNESCO chairholder, founder and chief patron of MIRS MIT Pune. Through this film, let us behold how his dream of peace through education has taken a monumental and eternal form in the form of this dome. Can we have the film, please? इक्कीसवीं शताब्दी में मेरी भारत माता विश्व गुरु बनने की काबिलियत रखता है। इट विल बिकम अ विश्व गुरु इन द 21st सेंचुरी। उसका छोटा सा उदाहरण, छोटा सा सिंबल यहाँ बन गया है, ऐसा मेरा मानना है। We have only 2 options. Either we live together or we perish together. It is in this context this monument will stand. We look at this magnificent dome. To me, this is not just the biggest dome in the world. To me, this is the biggest idea, the biggest message to the world. This country has always propagated one thought, Vasudhaiva Kutumbakam, my dear friends. I must say that in the entire history after the independence since 1947, this
This is one of the unique steps towards the contribution of universal humanity. I appeal to the Vice President and Honorable Chief Minister to recognize this World Peace Dome as a structure of national and global importance and support to promote it in such a way that it evolves as one of the prominent tourism destinations of the world. Thank you very much. My friends, with this, we are coming towards the conclusion of this gathering. And before we conclude, I would like to request the Program Director of School of Law at MIT World Peace University, Dr. Abhijit Dhereji, to kindly propose the vote of thanks. Thank you, sir. It is indeed my honor and privilege to deliver this vote of thanks at this August gathering of MPG 21 commencement ceremony. On behalf of MIT World Peace University School of Government, I express my heartfelt gratitude to our revered Professor Dr. Vishwanath Karad sir, whose vision has established this whole universe for us, and our beloved Executive President Dr. Rahul Karad sir. He is a chief initiator of this School of Government, and he is a dynamic leader behind all these ideas, who thinks not only for the 10 years, 15 years, he thinks for the 100 years, and he is going to leave a legacy which we all or the society is going to cherish further. We are deeply honored by the gracious presence of guest of honor, Advocate Jain Jai Bhave sir. Sir, your words will remain with us. Your words of democracy, your definition of democracy will definitely inspire us. Our sincere appreciation goes to our chief guest, Sri Shyam Jaju sir, for sharing his valuable insights, his experiences and his perspectives about public life and how character building is very important in building a political career. A special thanks to all the who graced this occasion, DP Agarwal sir, former chairman of Union Public Service Commission. I also take this opportunity to thank all the faculty members who have taken part in this particular organization, this program, along with the student volunteers, along with the student speakers, Prasanna and Tanvi. I finally, to my fellow graduates, to my fellow colleagues who have been working behind this particular organizing this event tirelessly, all the events team from events, team from purchase, even team from the media and printing, marketing, every team has worked and they have made this possible. So I will again thank one and all, and especially the students from SOG, students from media journalism, students from law. I have expressed my gratitude, deepest gratitude to all of you, and thank you once for all. Thank you, everyone. Thank you very much. And now, before we conclude this gathering, it is the tradition of this program. I would like to request all the students of MPG 21 to please come forward and stand in front, behind the guests, so that we can capture a beautiful photograph. नाही मी काढतो अवसर नाही Also.